हेलो एवरीवन, मैंने इस क्लास में डिस्कस करूंगे पीआईक्यू के साथ साथ उसके शॉर्ट नोट्स से रिवीजन भी करेंगे। पिछले क्लास में मैंने ऑलरेडी मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड स्वदेशी मूवमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट एंड टाइम ऑफ कर्जन्स ओके हमने देख लिया था। उसके भी एक्टिव रिकॉल हम इस क्लास में भी करेंगे एंड इस क्लास में हम न्यू जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट एंड होम रूल लीग। ओके, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट एंड होम रूल लीग के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखो 6 क्वेश्चंस, 6 एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इतनी सी टॉपिक्स के अंदर। ओके, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे एंड देन उसके बाद हम देखेंगे गांधी जी की साउथ अफ्रीकन एक्सपेरिमेंट। ओके, गांधी जी की साउथ अफ्रीकन एक्सपेरिमेंट क्या था, उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, वो हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर हम 5 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे प्रीलिम्स का पीआईक्यू एंड हम देखेंगे मेंस का भी अनेक पीआईक्यू है वो हम देखेंगे। सो इस क्लास में मैंने इतनी टॉपिक रिवाइज करके दैट्स मीन इजीली हो के दिन हम एक्टिव रिकॉल करेंगे डिफरेंट फेज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट से मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, टुवर्ड्स स्प्लिट, स्वदेशी मूवमेंट, इम्पैक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टुडे क्लास। आज की क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री की देखने की कोशिश करेंगे यूपीएससी में। जो चलो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड द होम रूल लीग। ओके, एंड द होम रूल लीग। सो देखो इन 1920 which of the following changed its name the Swaraj Sabha. Okay, which of the following changed its name to Swaraj Sabha. Okay, Swaraj Sabha की नेम चेंज हुआ है कैसे? ऑल इंडियन होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो क्या क्या मैंने बोला यहाँ पर ऑल इंडियन होम रूल लीग की नेम क्या चेंज तो है स्वराज्य सभा में एंड हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन एंड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की सर्वेंट के बारे में बोला। देन हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इकोनॉमिक क्रिटिक और क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। क्या बोला? हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इकोनॉमिक क्रिटिक। ओके, इकोनॉमिक क्रिटिक के बारे में बोला एंड क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया हु? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य लेयर एंड द आरसी दत्त। ओके, एंड द आरसी दत्त कौन सी नेम के बारे में यहाँ पर बोला? देन एनिमेशन was responsible for starting the home rule movement, the founder of the Theosophical Society, and once the president of Indian National Congress। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट? तो देखो नेक्स्ट हम देखेंगे consider the following statement, the most effective contribution made by the Dadabhai Nauroji, the cause of the Indian national movement was that he exposed the economic exploitation of India by the British. He is the economic exploitations of India by the British, exposed the economic exploitation of the Indians by the British, and interpreted the ancient Indian text, and restored the self-confidence of India, okay, and stressed the need of the erection of all the social evils before anything else. Which is the correct answers here? देखो, what is the most effective contribution made by Dadabhai Nauroji? Dadabhai Nauroji is the most important topic where repeatedly UPSC asked about him. Okay, the cause of the Indian national movement की क्या क्या cause है वो देखेंगे and was that he exposed the economic exploitation of India by the British। क्या बोला? Exposed the economic exploitation of India by the British। Okay, क्या exposed किया है? Economic exploitation exposed किया है of India की by the British। Then हम देखेंगे interpret the ancient Indian text। Okay, ancient Indian text को interpret किया है and restore किया है the self confidence of the Indians की self confidence restore किया है and stressed the need of eradication of all the social evils before anything else। So क्या क्या पूछा है यहाँ पर? इकोनॉमिक क्रिटिक, दैट्स एन अर्ली nationalist movement और होम रूल लीग में
इकोनॉमिक क्रिटिक किया था ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की। तो 1920 में स्वराज्य सभा चेंज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। ओके, स्वराज्य सभा। एंड who of the following were economic critic of the colonialism in India? Okay, who of the following was economic critic or critics of colonialism in India? Dadabhai Nauroji and G. Subramanian Iyer and R.C. Dutt. ओके, अच्छी तरह व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या है? दादाभाई नौरोजी की बात यहाँ पर बोला, जी सुब्रमण्य लेयर एंड आरती दत्त के बारे में यहाँ पर बोला है। ओके, कौन कौन है? हु इज द फॉलोइंग वाज वर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ द कॉलोनियलिज्म इन इंडिया? ओके, दादाभाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य लेयर एंड आरती दत्त। Select the correct answer using the code given below. Okay, then हम देखेंगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट was the responsible for the starting of the home rule league movement. तो क्या बोला? एनी बेसेंट क्या रिस्पॉन्सिबल है द स्टार्टिंग ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट एंड द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर भी था। एंड ऑल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी प्रेसिडेंट क्या था कि नहीं था? Which of the statement is the correct statement using the code given below? Consider the following statement. Most effective contribution made by the Dadabhai Nauroji. What is the most effective contributions made by the Dadabhai Nauroji to cause the Indian National Congress movement? To cause the Indian National movement. Okay, most effective contributions. क्या देखेंगे हम? Expose the economic exploitation of Indians by the British. Okay, exposed करेगा the economic exploitation of Indians. Economic exploitation of Indians by the British. Done. What is the economic exploitation? एंड द इंटरप्रेट द इंडियन टेक्स्ट के बारे में क्या किया? इंटरप्रेट किया। ओके, इंटरप्रेट किया एंड रिस्टोर किया द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो रिस्टोर द सेल्फ कॉन्फिडेंस भी किया गया, रिस्टोर भी किया यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या? ओके, नेक्स्ट देखो कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो देखना चाहिए। पहली बात तो ये, कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो देखना चाहिए। कौन कौन सी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट की इकोनॉमिक क्रिटिक कौन कौन था इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट? एंड व्हाट इज द होम चार्जेस? क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट जो था, उस अर्ली नेशनलिस्ट की इकोनॉमिक ब्रिटिश इंडियन की इकोनॉमिक क्रिटिक क्या क्रिटिक किया था, क्या क्रिटिसाइज किया था? एंड व्हाट इज द होम चार्ज क्या है? एंड होम रूल लीग मूवमेंट क्या है? ओके, होम चार्ज क्या है? होम रूल लीग मूवमेंट क्या है? देन हम देखेंगे, इतना ही टॉपिक है। ओके, तो इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट की इकोनॉमिक क्रिटिक देखने चाहते हैं। इट वाज attacked on first who pronounced and then हम देखेंगे अदर इकोनॉमिक क्रिटिक्स। ओके, ड्रेन ऑफ द वेल्थ के बारे में बोला, ड्रेन ऑफ द वेल्थ एंड दादाभाई प्रेजेंट हिज व्यू इन हिज पेपर प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी इन इंडिया प्रेजेंटेड। दादाभाई क्या प्रेजेंटेड किया था? एंड हम देखेंगे कि आरती दत्त क्रिटिसाइज्ड द ब्रिटिश पॉलिसी। ओके, क्रिटिसाइज द ब्रिटिश पॉलिसी एंड एम.जी. रानाडे wrote, okay, M.G. Ranade wrote an essay on the Indian economy to criticize the British economic policy. M.G. Ranade के बारे में बोला। एंड यहाँ पर भी जीके गोखले, ओके, क्या क्रिटिसाइज किया था? एंड अर्ली नेशनलिस्ट और क्या और भी नेम यहाँ पर देखा है। ओके, पहले नेम को हाईलाइट करो, कौन कौन क्रिटिसाइज किया था? कौन कौन से क्रिटिसाइज किया था? ओके, attack on the doctrine. Okay, it is the attack on the doctrine of the prosperous India. Okay, prosperous India which was propagated by the Britishers. जो ब्रिटिशर्स जो इंडिया को प्रोपागेटेड कर रहा था, ओके, ब्रिटिशर्स जो इंडिया को प्रोपागेटेड कर रहा था, उस प्रोपागेशन ने इंडिया की प्रॉस्परस किया था। ओके, प्रॉस्परस में क्या किया? अटैक किया। दादाभाई नौरोजी वाज द फर्स्ट हु propounded the theory of the drain of the wealth. तो the theory of the drain of the wealth कौन दिया था? दादाभाई नौरोजी दिया था। ओके, दादाभाई नौरोजी। पहली बात तो ए के कौन सी थ्योरी दिया था वो तो हम देखेंगे, लेकिन नेम भी याद रखना चाहिए। ओके, नेम देखो पहले यहाँ पर,
दादा भाई नौरोजी की बात बोला मैंने। अदर इकोनॉमिक क्रिटिक कौन था? जीवी जोशी एंड जी सुब्रमण्य लैयर एंड जी के गोखले। ओके, जी के गोखले, आरती दत्ता, पीसी राय एंड एम जी राणा ने। ड्रेन ऑफ द वेल्थ। What is the drain of the wealth? An unilateral constant flow of wealth from India to Britain, and for which the India did not get any adequate return. ओके, जैसे यहाँ पर नेम कोई भी उल्लेख नहीं है। और दादा भाई यहाँ पर फिर से दादा भाई नोटिस प्रेजेंटेड हिज व्यू। ओके, दादा भाई नोटिस आरसी दत्त प्रेजेंटेड हिज व्यू, आरती दत्ता ऑल्सो प्रेजेंटेड हिज व्यू। एंड देन हम देखेंगे क्या, देन हम देखेंगे टू क्रिटिसाइज। ओके, डन। यहाँ पर देखो, यहाँ फिर से आरती दत्ता क्रिटिसाइज्ड, एम जी रानाडे, जी के गोखले। ओके, डी के गोखले की बात यहाँ पर बोला, अर्ली नेशनलिस्ट की बात यहाँ पर बोला। डन। देखो, नेम पहले नेम याद रखो कौन कौन सी। दादा भाई नौरोजी क्रिटिसाइज किया था, जीवी जोशी, जीवी सुब्रमण्य लैयर, जी के गोखले, आरसी दत्त, जी के गोखले, आरसी दत्त, सुब्रमण्य लैयर, जीवी जोशी। ओके, नेम याद रखो पहले, क्या क्या नेम मैंने बोल रहा हूँ। दादा भाई नौरोजी, जीवी जोशी, जी सुब्रमण्य लैयर एंड जी के गोखले, आरसी दत्त, पीसी राय, एम जी राणा ने। ओके, एम जी राणा ने नेम याद रखो। दादा भाई नौरोजी क्या प्रेजेंट किया था, आरसी दत्त क्या प्रेजेंट किया था, एंड आरती दत्त दोनों प्रेजेंटेड किया था। एमजी राणा ने भी प्रेजेंट किया था, जेके गोखले भी प्रेजेंट किया था। एंड आर्ली नेशनल ने व्हाट इज द क्रिटिसाइज्ड। एबार क्रिटिसाइज्ड क्या क्या हुआ था देखो। थियरी ऑफ द ड्रेनेज ऑफ वेल्थ दिया था क्या, दादा भाई नौरोजी प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। दैट्स मीन इंडिया से ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन इकोनॉमी से ब्रिटिश गवर्नमेंट okay take lots of takes lots of economic wealth and this carry okay in London। तो इसको theory of the drain of wealth क्या बोलते हैं इसको, theory of drain of wealth। ओके, theory of drain of wealth बोल रहा है इसको, theory of drain of wealth बोलते हैं इसको। एंड अदर इकोनॉमिक क्रिटिक was जीवी जोशी एंड जी सुब्रमण्य लैयर। ओके, जीवी जोशी और जी सुब्रमण्य लैयर, जीवी जोशी, जी सुब्रमण्य लैयर एंड जी के गोखले, आरती दत्त, पीसी राय, एम जी रानाडे। क्या क्या मैंने बोल रहा हूँ अदर इकोनॉमिक क्रिटिक में। और जीवी जोशी था, जीवी जोशी, जी सुब्रमण्य लैयर, जी के गोखले एंड आरती दत्त, पीसी राय, एम जी रानाडे, डन। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड यूनिलैटरल कांस्टेंट फ्लो। व्हाट इज द ड्रेन ऑफ वेल्थ? फिर ड्रेन ऑफ ऑयल दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। एवर ड्रेन ऑफ, व्हाट इज द ड्रेन ऑफ ऑयल? ड्रेन ऑफ ऑयल क्या है? ये यूनिलैटरल कांस्टेंट फ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटिश। हाँ, ये यूनिलैटरल दैट्स वन डायरेक्शन फ्लो होगा, यूनिलैटरल दैट्स वन डायरेक्शन फ्लो होगा इंडिया से ब्रिटिश में ही। तो ये यूनिलैटरल वन कांस्टेंट फ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटिश, इंडिया से कहा जाएगा ब्रिटिश में जाएगा। एंड फॉर व्हिच इंडिया डोंट गेट एनी एडिक्वेट रिटर्न्स। इसकी वजह से इंडिया डोंट गेट एडिक्वेट रिटर्न्स, इंडिया कोई भी एडिक्वेट रिटर्न्स यहाँ पर नहीं पाते हैं। ओके, डोंट गेट एडिक्वेट रिटर्न। देन हम देखेंगे दादा भाई प्रेजेंटेड इन हिज व्यू इन पेपर प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड द लेटर ऑन इंक्लूड ऑन हिज बुक प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड अन ब्रिटिश रूल। ओके, अन ब्रिटिश रूल। सो दादा भाई की क्या क्या, दादा भाई ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इज द यूनिलैटरल कांस्टेंट फ्लो ऑफ wealth from India to British and for which India don't get any adequate returns. India don't get any adequate returns. India कोई भी adequate return नहीं पाते थे। Okay, and दादा भाई presented in his view, in his paper. So दादा भाई presented this view in paper poverty in India. Okay, poverty in India and un-British rule. Then and RC Datta in his book economic history of India, क्या RC Datta in his book presented the economic history of India, okay, to criticize the British economic policy, and also supported the theory of the drain of wealth, तो दादा भाई नौरोजी के क्या क्या था, theory of the drain of wealth and poverty in India and poverty in India and British rules and RC Datta के economic history of India to criticize the British economic policy and also supported the theory of the drain of wealth. And RC Datta criticized the British policies, the deindustrializations of India.
Deindustrialization of India. Arthur criticized the British policy of deindustrialization of India. Okay, deindustrialization of India criticized किया था आरसी दत्त ने. And the M.G. Ranade wrote in an essay on the Indian economy to criticize the British economic policy, in India. Okay, M.G. Ranade wrote an essay. M.G. Ranade wrote an essay on the Indian economy to criticize the British economic policy in India. And to criticize the British economic policy in India. So क्या बोला मैंने, M.G. Rana ने wrote an essay on the Indian economy to criticize the British economic policy in India. Then R.C. Datta also criticized the British policy disindustrialization of India. India की deindustrialization को criticize किया था. And G.K. Gokhale criticized the British economic policy in his budget. G.K. Gokhale criticized the British economic policy. Okay, British economic policy in his the budget speech in 1902 से 03 के बीच में, 1902 से 03 के बीच में जीके गोखले criticized the British economic policy in his budget speech. The early nationalists criticized the home charges and considered it as one of the most important tools of drain of wealth. तो क्या मैंने बोला था, द अर्ली नेशनलिस्ट क्रिटिसाइज द होम चार्जेस. क्या क्रिटिसाइज किया था द होम चार्जेस एंड द कंसिडर इट एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ. ओके, तो अर्ली नेशनल क्रिटिसाइज द होम चार्जेस एंड द कंसिडर इट एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल द ड्रेन ऑफ वेल्थ. अब हम देखेंगे होम चार्ज. व्हाट इज द होम चार्ज? होम चार्ज के बारे में बोल रहा था. व्हाट इज द होम चार्ज? व्हाट इज द होम चार्ज? व्हाट इट रेफर्स, क्या रेफर किया था? ओके, व्हाट इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर्स इन इंग्लैंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया. क्या रेफर किया था? और व्हाट इज द एक्सपेंसेस ऑफ इंडिया? एक्सपेंस ऑफ इंडिया एंड द मिलिटरी एक्सपेंडिचर्स क्या है? डिविडेंड टू एंड द स्टोर परचेस एंड द सैलरी, पेंशन एंड अदर पेमेंट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट. की बात यहाँ पर आया. सो क्या क्या मैंने बोल रहा था? इट रेफर टू एक्सपेंडिचर incurred in England by the secretary of the state. Home charge, it refer to एक्सपेंडिचर को रेफर कर रहा था इन द इंग्लैंड में. ओके, एक्सपेंडिचर को रेफर कर रहा था इंग्लैंड में बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. सेक्रेटरी स्टेट इंग्लैंड में प्रेजेंट था. उस सेक्रेटरी स्टेट में स्टेट की बात यहाँ पर बोल रहा था. टू एक्सपेंडिचर incurred in England by the secretary of state on the behalf of the इंडिया की बिहाफ में कर रहा था. ओके, एक्सपेंसेस ऑफ इंडिया हाउस इन द लंदन. एक्सपेंसेस ऑफ इंडियन हाउस इन लंदन. ओके, मिलिटरी एक्सपेंडिचर डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी. ओके, डिविडेंड्स to the shareholders of East India Company and store purchases in England for the India, like iron, steel purchases from England for India. Okay, so expenses क्या फिर से देखो, expenses of India House in London. Okay, India House in London and the military expenditure के बारे में बोल रहा है यहाँ पर. military expenditure के बारे में बोल रहा है. and dividend to the shareholders of the East India Company. ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर की बात यहाँ पर बोल रहा है. और शेयर होल्डर में डिविडेंड की बात यहाँ पर बोल रहा है. मिलिटरी एक्सपेंडिचर. ओके, स्टोर परचेस इन इंग्लैंड. स्टोर परचेस इन इंग्लैंड फॉर इंडिया. इंडिया के लिए जो स्टोर परचेस कहते हैं इंग्लैंड में, उसके बारे में लाइक आयरन एंड स्टील परचेस फ्रॉम इंग्लैंड फॉर इंडिया. इंडिया के लिए. सैलरी एंड पेंशन. ओके, सैलरी पेंशन एंड अदर पेमेंट्स of British officials. Salary pension and other payments of British officials in India, both civil and army. Okay, then interest payment of foreign capital investment in India. Foreign में capital investment हो रहा था इंडिया में, उसके बारे में बोला. like the investment in railways and irrigation projected. होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में बोला. कौन कौन से फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल है होम रूल लीग मूवमेंट की? व्हाट इज द एम ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट एंड द बेसेंट होम रूल लीग एंड द तिलक होम रूल लीग एंड द लखनऊ सेशन ऑफ द INC. ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड व्हाई द होम रूल एग्रीगेशन फेडेड आउट बाय 1919 एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स. ओके, एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स.
होम रूल लीग मूवमेंट, व्हाट इज द फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है होम रूल लीग मूवमेंट के लिए, एंड व्हाट इज द एम ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट, एंड द बेसेंट की एनिमेशन की होम रूल लीग मूवमेंट, एंड तिलक की होम रूल लीग मूवमेंट, लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाई द होम रूल लेगिस्लेशन carried out by 1990, and what is the government response, what is the government response. So home rule league movement, home rule league movement is a section of the nationalist. Section of nationalist, the moderate or the disillusioned, moderate or the disillusioned, moderate के बारे में बोला, and then people were feeling the burden of the war time, feeling of burden. Okay, he was ready to assume the leadership, and animation decide to building a movement. Animation launched a campaign, okay, through his two papers. So क्या बोल रहा है यहाँ पर, a section of the nationalists felt okay that popular pressure was required to attain the concessions from the government. Okay, a section of the nationalists felt that popular pressure was required to attain the concession from the government. Okay, concession from the government. A section of the nationalists felt that popular pressure was required. Pressure was required to attain the concessions from the government. Okay, that's when lots of people give pressures on the government to acquire but require attain concession को attain करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा. The moderate was disillusioned with the Morley Minto reforms. Okay, the moderates were disillusioned. Moderates were disillusioned with the Morley Minto reforms. Morley Minto reforms के बारे में disillusioned किया था moderates ने. Okay, disillusioned with the Morley Minto reforms. The people were feeling of the burden of wartime. Okay, of wartime miseries caused by the high taxation and the rise in price. Okay, caused by the high taxation and the rise in price. So people were feeling the burden feeling किया था of the wartime miseries. Okay, wartime miseries caused by high taxation and a rise in price. Okay, and a rise in price. Tilak was ready to assume after his release in June 1940. Okay, Tilak was ready to assume leadership after his release in June 1914. Animation in 1914 decided the building of a movement for home rule on the line of the Irish Home Rule League. Decided the building of a movement for home rule on the line of the Irish Home Rule League. In early 1915, Animation launched a campaign through two papers. दोनों पेपर में एक न्यू इंडिया एंड द कॉमनवेल्थ. ओके, न्यू इंडियन कॉमनवेल्थ organized public meeting okay, and the conference to demand that the India be granted self-government on the line of the white colony. तो फिर से देखो कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं होम रूल लीग मूवमेंट के लिए. तो फैक्टर ए सेक्शन ऑफ द नेशनलिस्ट, a section of the field that the popular pressure required to attain the concession from the government. Okay, moderates were the disillusioned with the Morley Minto reforms. Minto reforms के disillusioned था moderates के. The people were feeling the burden of wartime miseries की burden यहाँ पर feel किया था people ने, and caused by the high taxation and rise in price. High taxation भी हुआ था, rise in price भी हुआ था. Okay, rise in price भी हुआ था. Tilak was ready to assume the leadership after his release in June 1940. Tilak was ready to assume the leadership after his release in June 1940, and Animation in 1940 decided the buildings of a movement
for Home Rule on the line of the Irish Home Rule League. On the line of the Irish Home Rule League, early 1950, Annie Besant launched a campaign through her two papers, okay, New India and the Commonwealth and organized public meeting, and the conference to demand that India be granted self-government on the line of the white colony. Aim of the Home Rule League. What is the aim and to establish to demand? So the league combined to convey the common man the message of home rule as a self-government. Okay, the message of the home rule as a self-government. The government to establish a government of councils with members chosen by Indian people. To demand the formation of linguistic states. To demand the formation of the linguistic states and the vernacular languages and educations. Okay, तो क्या क्या यहाँ पर बोल रहा है, इसका एम था टू कॉन्वे द कॉमन मैन एंड द message of the self government and to establish the government and to establish a government of councils with the members chosen by the Indian people. Done. To demand the formation of linguistic state. To demand the formation of the linguistic states and the vernacular language educations. Okay, and vernacular language educations. Tilak Home Rule League. Tilak and animation set up. Tilak and animation. What set up? Okay, set up. December 1950 at Pune, Tilak held the conference of the nationalists to discuss the issue of home rule. Home Rule League. Okay, so what is the held and what is the setup? Okay, then president and okay, the restricted to the. So Tilak and animation set up their separate league. Tilak and animation set up their separate league to avoid any frictions. December 1915, 15 at the Pune, Tilak held the conference of nationalists. Pune to discuss the issue of the home rule. Okay, Tilak League was set up in Tilak League. Okay, was set up in April 1916, Belgaum, during the Bombay Provincial Conference. And the G.S. Khaprate was a founding member of the Tilak League. And President Joseph Kaka. Okay, and Baptista and the Secretary N.S. Kelkar. Tilak's league was restricted to the Maharashtra, excluding Bombay City. Okay, excluding Bombay City. Tilak's leagues are restricted to the Maharashtra, excluding Bombay City, and Karnataka, and the central provinces and the bearer. It had the 6 branches, and the demand. It had the 6 branches. Okay, and the demands included Swarajya. Formation of linguistic states and educations in the vernacular languages. Okay, linguistic states and education with the vernacular languages. तो क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, Tilak's league was restricted to the Maharashtra, Karnataka, central provinces and the barriers. It had the 6 branches and demand including the Swarajya and formation of the linguistic state, formation of the linguistic states and education in the vernacular language. So क्या क्या बोल रहा है, Swarajya, linguistic states, formation of the linguistic states, education in the vernacular languages. Okay, so Tilak Home Rule League में क्या सेटअप हुआ था, सेटअप separate league to avoid any fictions. Okay, Tilak and animation set up their separate leagues to avoid any fiction. Okay, to avoid any fiction. December 1915 at Pune, Tilak held the conference of nationalists. Okay, held the conference of nationalists to discuss the issue of home rule. December 1915, Pune Tilak held the conference of nationalists to discuss the issue of the home rule. Tilak League was set up in April 1916. Okay, during the Bombay Provincial Conference, and the G.S. Khaprate was a founding member of Tilak League. President Joseph Kaka and Baptista and the Secretary N.S. Kelkar. Okay,
Tilak League was restricted to the Maharashtra, excluding the Bombay city. Tilak League was restricted to the Maharashtra. Okay, restricted to the Maharashtra, excluding the Bombay city, Karnataka, central provinces, and the Beirats. And it has the six branches, and the demand was Swarajya, Swarajya, formation of the linguistic states, and education in the vernacular languages. Okay, done. Animation Home Rule League. Animation Home Rule League was set up, कब सेटअप हुआ था? ओके, इवन अर्लियर में क्या था? ब्रांचेस न्यूज़पेपर एंड होम रूल एजुकेशन. ओके, होम रूल एजुकेशन joined by. ओके, यहाँ पर भी ब्रांचेस के बारे में बोला. ऑर्गेनाइज्ड एज देन ओके, डन. आप देखो, एनिमेशन लीग कब सेटअप हुआ था? एनिमेशन लीग सेटअप हुआ था सितंबर 1916 में. ओके, एनिमेशन की लीग कब सेटअप हुआ था? सेटअप हुआ था 1916 में इन आधार एंड द कवर्ड द रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द बॉम्बे सिटी. ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं? बसंत लीग वाज सेट अप इन द बसंत लीग वाज सेट अप इन September 1916 इन आधार एंड कवर द रेस्ट ऑफ इंडिया. क्या हो रहा था? कवर द रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द बॉम्बे सिटी. ओके, including the Bombay city. India including the Bombay city. Even earlier in 1916, some of Besant impatient followers already set up home rule groups. Okay, some of Besant Besant's important followers set up home rule group. 20 branches of Besant's league, animation league, had been set up all over India. फिर से देखना पड़ेगा. Okay, 1 minute. Newspaper देखो, न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एट द कॉमनवेल्थ. द होम रूल एजुकेशन वाज लेटर जॉइंड बाय द मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फुलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, ओके, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू एंड लाला लाजपत राय. तो फिर से देखो, फिर से द एनिमेशन लीग सेटअप इन December 1916. Okay, set up in the December 1916 in Adher and covered the rest of India. Including the Bombay city. Done. To set up September 1916 in Adher and the covered the rest of India including the Bombay city. It had the 200 branches. Okay, 200 branches was loosely organized as compared to the Tilak League. Loosely organized as compared to the Tilak League, and had George Orundala as the organized secretary. Okay, organized secretary, and the Sir S. Subramania Iyer as the honorary president. Okay, grand old man of the South India. Even earlier 1916, some of Manivation impatient followers already set up home rule groups. Even earlier 1916, some of Manivation impatient followers already set up the home rule group. Then 200 branches Besant leagues had been set up all over the India. 200 branches of Besant league had been set up all over the India. Okay, so here पर और एक चीज, earlier 1916 some of Besant important followers already set up the home rule league. यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नेम है. ओके, इस नेम के बारे में इंडुला योको ना. ओके, बॉम्बे न्यूज़पेपर, Young India also set up All India Propaganda Fund to issue the pamphlets. Okay, All India Propaganda Fund to issue the pamphlets. 200 branches of Besant League had been set up all over India. न्यूज़पेपर में क्या था? न्यू इंडिया था और कॉमनवेल्थ भी था. तो होम रूल एजुकेशन वाज सेट अप जॉइंड बाय द मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बाबूलाल देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, ओके, बहादुर सप्रू और लाला लाजपत राय. लखनऊ सेशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सेशन. पेपर क्या हुआ था? यहाँ पर जो हुआ था वो एक्सट्रीमिस्ट वर रीएडमिटेड. ओके, एक्सट्रीमिस्ट पर रीएडमिटेड की बात आया. देन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस सेट अप पुट अप जॉइंट डिमांड. को लखनऊ पैक्ट बोलते हैं. लखनऊ पैक्ट इज इंपॉर्टेंट वर्ड. कांग्रेस एक्सेप्ट
क्या एक्सेप्ट किया था? ओके। देन मुस्लिम ग्रांट फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ सीट ऑफ द लेजिस्लेशन इन ऑल इंडिया, ग्रांट क्या ग्रांटेड हुआ था? एंड ये पे देखो हाफ ऑफ द मेंबर्स में एंड एग्जीक्यूटिव सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशरी, शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशरी। तो extremists were readmitted to the Congress. Were readmitted to the Congress. Reunion of moderates and extremists. Okay. Extremists were readmitted to the Congress. That's mean जो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो शूरट स्प्लिट्स हुआ था, उस शूरट स्प्लिट्स 1907 में वो फिर से रीएडमिटेड हो रहा है 1916 में। ओके, टू द कांग्रेस एंड रीयूनियन ऑफ द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। क्या हो रहा है? रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, रीयूनियन हो रहा है। ओके, द कांग्रेस प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजुमदार वेलकम द एक्सट्रीमिस्ट। Okay, Ambika Charan Majumdar welcomed the extremist. Muslim League and Congress put up joint demand under the Lucknow Pact. Okay, Muslim Leagues and the Congress, Muslim League भी था, Muslim League भी create हो गया था, and Congress put up joint demand under the Lucknow Pact. Under the Lucknow Pact, Congress accept. Okay, Congress accept the League's positions on League's की position on separate electorate and the 19th memorandum. Okay, कांग्रेस एक्सेप्टेड द लीग पोजीशन, लीग्स की पोजीशन एक्सेप्ट किया था वो सेपरेट इलेक्टोरेट, दैट्स मीन सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा एंड द 19th मेमोरेंडम भी रहेगा, 19th मेमोरेंडम भी रहेगा। देन मुस्लिम्स वर ग्रांटेड फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स। ओके, मुस्लिम वर ग्रांटेड फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर्स at all India and the provinces level. Okay, Muslim were granted fixed proportion of seats in legislations. Okay, fixed proportion of seats in legislation at all India and provincial level. Half of the member of viceroys and provincial governors, executive councils should be Indian. Okay, यहाँ पर half of the member of the viceroys and provincial governors. Okay, viceroys and provincial governors की half of the Indians, half of the members जो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी इंडियंस। क्या होना चाहिए? शुड बी इंडियंस होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशरी। ओके, जुडिशरी से सेपरेटेड होना चाहिए। तो लखनऊ पैक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और लखनऊ सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916 में एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स जॉइन टुगेदर और रीएडमिटेड टू द कांग्रेस एंड रीयूनियन ऑफ द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। इस टाइम पे कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था? कांग्रेस प्रेसिडेंट था अंबिका चरण मजुमदार। कांग्रेस प्रेसिडेंट था अंबिका चरण मजुमदार एंड वेलकम द एक्सट्रीमिस्ट को वेलकम किया था। ओके, एंड मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस पुट अप द जॉइंट डिमांड अंडर द लखनऊ पैक्ट। ओके, मुस्लिम लीग भी था और कांग्रेस भी था, पुट अप द जॉइंट डिमांड अंडर द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के अंदर में जॉइंट डिमांड पुट अप किया था। ओके, कांग्रेस एक्सेप्टेड द लीग पोजीशन। कांग्रेस एक्सेप्ट किया था लीग की पोजीशन को एंड ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट। ओके, सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा, इलेक्टोरेट एंड द 19th मेमोरेंडम में रहेगा। ओके, एंड मुस्लिम वर ग्रांटेड फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ द सीट्स इन द लेजिस्लेचर एट ऑल इंडिया एंड द प्रोविंशियल लेवल्स। ओके, एट ऑल इंडिया प्रोविंशियल लेवल्स एंड हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉयज, हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉयज एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी इंडियंस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हाफ ऑफ द मेंबर्स। Okay, half of the members of the viceroys and the provincial governors, half of the provincial governor and executive councils, governors, viceroys की बात बोला और provincial governor की बात बोला। जो executive council should be Indians। Okay, यहाँ पर executive council जो होना चाहिए वो Indians होना चाहिए। Okay, executive should be separated from the judiciary। executive should be separated from the judiciary। judiciary से separate होना चाहिए executive। Why the home rule agitations headed out by 1919? Okay, गवर्नमेंट रेस्पॉन्स, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्स क्या है? देखो, लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पर क्या लैक था? देखो, लैक व्हाई होम रूल रेगुलेशन फेडेड आउट बाय 1919। ओके, क्या लैक था? और कम्युनल राइट्स क्या वीकनेस था? इस लैक की वीकनेस एंड द पैसिफिक मॉडरेशन और पैसिफिक, क्या पैसिफिक था बाय 12 रिफॉर्म।
by talk of reform. ओके, टॉल्क ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, यहाँ पर पैसिव रेसिस्टेंस की बात आया, and the Tilak had go to abroad. Tilak had go to abroad in the connection with the liberal cases. Liberal case against the violence. Okay, go to abroad. Tilak abroad गया था, and Gandhi accepted the presidency. Okay, the presidency of the All India Home Rule League. ओके, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस की लैक था यहाँ पर, लैक ऑफ द इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस की लैक था, एंड कम्युनल राइट, ओके, कम्युनल राइट्स वर विटनेस ड्यूरिंग द 1970 टू 80, ओके, यहाँ पर कम्युनल राइट्स भी हुआ था, इस राइटनेस इज द विटनेस ड्यूरिंग द 1917 to 18. The moderates were pacified by talk of reform contained in Montagu statement of the August 1917. Okay, the moderates were pacified by talk of reforms contained in Montagu statement of August 1917. Okay, तो क्या बोल रहे हैं पर, the moderates were pacified by talk of reform contained the Montagu statement of August 1917. Okay, यहाँ पर Montagu statement आ रहा है. Then talk of passive resistance by the extremist. तो moderates क्या बोल रहे थे, पैसिफिक बाय टॉक ऑफ रिफॉर्म की बात बोल रहे थे, मॉन्टेगू स्टेटमेंट की 1917 में मॉन्टेगू स्टेटमेंट जो आया था, एंड पैसिव रेसिस्टेंस बाय द एक्सट्रीमिस्ट पैसिव रेसिस्टेंस दे रहा था, कीप द मॉडरेट्स अवे फ्रॉम एक्टिविटी, और कीप द मॉडरेट्स अवे फ्रॉम द एक्टिविटी from the September 1918 onwards. Tilak had to go abroad. abroad गया था. Tilak had to go abroad 1918 में in the connection with a libel case. Okay, connection with a libel case against the Valentine Chirol, whose book Indian Unrest. Okay, Tilak had to go abroad. abroad गया था in connection with the libel केस. ओके, लिबेल जो केस है अगेंस्ट द वैलेंटाइन चिरोल के अगेंस्ट में जो लिबेल केस था, इस लिबेल केस में उस लिबेल केस कनेक्शन के लिए एक्चुअली तिलक को अब्रोड गया था. उस बुक, ओके, इस बुक इंडियन अनरेस्ट था, तिलक की बुक इंडियन अनरेस्ट. इन 1920 गांधी एक्सेप्टेड द ऑल इंडिया होम रूल लीग. ओके, प्रेसिडेंस ऑफ द ऑल इंडिया होम रूल लीग, गांधी एक्सेप्टेड द ऑल इंडिया होम रूल लीग and the changed organizations name to the Swarajya Sabha. Okay, so Gandhi accepted the presidency of the All India Home Rule League. All India Home Rule League क्या गया, एक्सेप्ट किया था. ओके, ऑल इंडिया होम रूल लीग को क्या गया, एक्सेप्ट किया था, एंड द चेंज्ड द ऑर्गेनाइजेशंस नेम चेंज करके स्वराज्य सभा क्रिएट किया था. ओके, within a year however the league joined the Indian National Congress. ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो क्या हुआ यहाँ पर, इन 1920 गांधी एक्सेप्टेड द प्रेसिडेंस ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग. ऑल इंडिया होम रूल लीग का एक्सेप्ट किया था, एंड चेंज द ऑर्गेनाइजेशंस नेम टू द स्वराज्य सभा की नेम चेंज किया था विद इन ए ईयर. एंड हाउएवर द लीग जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड लीग जॉइन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, द गवर्नमेंट calm down with a severe representation. Calm down with the severe representation. गवर्नमेंट रेस्पॉन्स क्या था, severe representation दे रहा था. ओके, एंड इन जून 1917 एनिमेशन एंड हर एसोसिएटेड डन. एनिमेशन के बारे में बोल रहा. एंड देन यहाँ पर क्या मॉन्टेगू डिक्लेरेशन किया था. ओके, एनिमेशन was released and Tilak की suggestion. Okay, Tilak की suggestion. So, as a mark of the protest, and Tilak advocates. तो देखो, पहली बात तो गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्स आया था इस टाइम में. द गवर्नमेंट calm down with severe repression. Okay, government calm down with severe repression, especially in Madras. severe repression हुआ था स्पेशली मद्रास में, where the students were prohibited from attending political meeting.
द गवर्नमेंट केम काम डाउन विद सेवरी रिप्रेशन जैसे करके इस मूवमेंट को रिप्रेशन करना चाहिए को ट्राई कर रहा था, स्पेशली इन मद्रास में वेयर द स्टूडेंट वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग द पॉलिटिकल मीटिंग। पॉलिटिकल मीटिंग से अटेंड प्रोहिबिटेड किया था। ओके, प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग द पॉलिटिकल मीटिंग। In June, in June 1970, animation and her associated VP Odia and the gods Arundala. Okay, Arundala were arrested. तो क्या बोल रहा था? In June 1917, animation and her associated VP Odia. Okay, VP Odia and the gods Arundala were arrested. Arrested क्या? Animation पे भी arrested किया था? Oh, 1917 में. As a mark of protest, Sir S. Subramanya Iyer renounced his knighthood. Okay, as a mark of protest, Sir S. Subramanya Iyer renounced his knighthood. Okay, July 1970, Tilak advocated the use of weapon of passive resistance. Okay, Tilak advocated the use of the weapon of the passive resistance. Passive resistance की advocate किया था। और civil disobedience if the government refused to release the interest. As a mark of the protest, Sir S. Subramanya Iyer renounced his knighthood. Okay, and July 1970, Tilak advocated the use of the weapon of passive resistance or civil disobedience of the government refused. Okay, government refused to release the interest. Montagu's declarations of August 1917 Montagu's declaration दिया था अगस्त 1917 में। animation was released in September 1917। ओके, सितंबर में रिलीज हो गया था। जून में एनिमेशन को अरेस्ट किया और सितंबर में एनिमेशन को रिलीज कर दिया। उसमें मॉन्टेगो डिक्लेरेशन ऑफ द अगस्त में ओके, जून जुलाई अगस्त सितंबर में ही एनिमेशन को रिलीज कर दिया। एट तिलक सजेशन एनिमेशन वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एंड ओके, तिलक के सजेशन था कि एनिमेशन थी प्रेसिडेंट हुए ओके कांग्रेस कैन शी बिकम द फर्स्ट वुमन ऑफ द प्रेसिडेंट at the Calcutta session in 1917. Okay, so first woman president. Okay, she became the first woman president. Okay, कांग्रेस की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट दैट्समैन कौन था और एनिमेशन था इनका एट द कलकत्ता सेशन 1917। ओके, तो हो गया, तीसरी बात थी। अब चलो नेक्स्ट। ओके, और एक चीज इजीली याद करने के लिए, इकोनॉमिक क्रिटिक आर्लियर नेशनलिस्ट में कौन कौन था? ओके, कौन कौन था? दादाभाई नौरोजी एंड देन आरसी दत्त, एमजी रानाडे एंड गोकुल कृष्ण गोखले। ओके, गोकुल कृष्ण गोखले था। और दादाभाई, और एक बात, डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रॉस्परस इंडिया को अट्रैक्ट करने के लिए एंड which was propagated by Britishers, doctrine of prosperous India. Dadabhai Naoroji was the first who pronounced the theory of the drains of wealth, and other economic critic में था G.V. Joshi, G. Subramanya Iyer, and G.K. Gokhale, R.C. Dutt, M.G. Ranade. And drain of the wealth is the unilateral constant flow of wealth from the India to Britain, and for which India did not get any adequate return. Dadabhai presented in his view in paper Poverty in India, and later on included in his book Poverty in India and Un-British Rules. Okay, presented in his view in paper Poverty in India and his book Poverty in India and Un-British Rules. R.C. Datta, in his book The Economic History of India, to criticize the political and economical situations of Indians and also support the drains theory. And R.C. Datta criticized the deindustrialization of India, British policies of the deindustrializations in India. And M.G. Ranade wrote an essay on the British economic to criticize the British economic policy in India, and Gokul Krishna Gokhale criticized the British economic policy in the budget in 1902 and 03. The early nationalists criticized the home charts, and they considered it one of the most important tool at the day level. Okay, so home charts क्या था? Home charts था secretary of the state जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था behalf of the India in इंग्लैंड। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस इंडियन इन हाउस, तो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक्सपेंसेस था जो इंडियन हाउस
इंडियन हाउस इन द लंदन में इंडियन हाउस था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जहाँ पर रहता उसका एक्सपेंसेस के बारे में बोल रहा है। एंड द मिलिट्री एक्सपेंडिचर क्या था, तो व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द मिलिट्री का एक्सपेंडिचर की बात यहाँ पर बोल रहे हैं। एंड डिवाइडेड टू द शेयर होल्डर, ओके शेयर होल्डर में डिवाइडेड हो गया था, डिवाइडेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी, ओके ईस्ट इंडियन कंपनी में डिवाइडेड हो गया था। स्टोर पार्सेस इन इंग्लैंड फॉर इंडिया, तो इंग्लैंड में स्टोर पार्सेस कर रहे थे इंडिया और इंडिया के लिए, जो स्टील आयरन पार्सेस फ्रॉम सॉरी शोर नहीं शेयर होल्डर ऑफ इंडियन ईस्टर्न divided to the shareholders of East India Company. Okay, so store purchases in England for India. Iron steel purchases from England for India. इंडिया के लिए इंग्लैंड को आयरन स्टील को परचेस कर रहा था। एंड सैलरी पेंशंस एंड अदर पेमेंट्स, ओके द सैलरीज पेंशंस एंड अदर पेमेंट्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया बोथ द सिविल एंड आर्मी, ओके सैलरी पेंशन एंड अदर पेमेंट कर रहा था ब्रिटिश ऑफिशियल्स in India, both the civil and army. Third, salary, pension, and other payments of British officials in India, both civil and army. Listen, ब्रिटिश ऑफिशियल्स की जो आर्मी सिविल और आर्मी के लिए जो सैलरी पेंशन दे रहा था एंड पेमेंट दे रहा था ब्रिटिश ऑफिशियल्स की, उसके बारे में बोल रहा है। तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओके इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा था फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, लाइक द इन्वेस्टमेंट इन रेलवेज एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था फॉरेन से, उसके इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में बोल रहा है इन इंडिया में, जो लाइक द इन्वेस्टमेंट हो रहा था इन रेलवेज एंड द इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो रेलवे से इरिगेशन प्रोजेक्ट में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा था उसके इंटरेस्ट पेमेंट की बात यहाँ पर बोल रहे हैं। फिर हम जाएंगे होम रूल लीग में, और होम रूल लीग में कौन कौन सी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, व्हाट इज द एम एंड व्हाट इज द एनिमेशन होम रूल लीग, व्हाट इज द तिलक होम रूल लीग एंड व्हाट इज द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड व्हाई home rule regulations carried out by 1919 and what is the government response. So what is the factor responsible for the home rule league? A section of the nationalists feel the popular pressure was required to attend the concession from the government. Popular pressure need to attend the concession from the government. The moderates or the disillusioned with the Morlow Minto reforms. Okay, moderates were disillusioned with Morlow Minto reforms and were from the Morlow Minto reforms से moderates were disillusioned हो रहा था, and from people were feeling the burden of the wartime miseries के लिए people were feeling the burden and caused by the high taxation and the rise of the price. Tilak was ready to assume leadership after this release in June 1914. Okay, Tilak was ready to assume leadership after his release in 1914. Anyway, in 1914, decided building a movement for home rule on the line of the Irish Home Rule League. Okay, on the line of the Irish Home Rule League. Decide कर रहा था. Then early 15 में, Animation launched a campaign through the had 2 pages. New India and Commonwealth. 2 पेज था. 2 पेज का नाम था New India and the Commonwealth. Okay, and organized public meeting and the conference to demand that India granted self-government on the line of the white colony. Okay, on the line of the white colony. Then, what is the aim of the Home Rule League? Home Rule League क्या aim था? The league combined aimed to convey to the common man the message of home rule as the self-government. Aim था self-government की main aim था common man के पास जाना and self-government की main aim. Establish कर रहा था government council, एक government council establish करना and the members chosen by the Indian people. और इस government council का main member कौन होगा? Main member होगा Indian people. And to demand the formation of the linguistic state. Linguistic state की formation जो, to demand the formation of the linguistic states and the vernacular language educations. Okay, क्या demand करता? Formation of the linguistic and the vernacular language educations. Then the aim था mainly self government and to establish a government council with members chosen by Indian people. Okay, demand the formation of the linguistic states and vernacular languages. Tilak की home rule league. Tilak and Animation set up their separate league. Okay, Tilak and Animation set up their separate league to avoid any fictions. Then तो क्या बोल रहा हूँ मैं? Tilak and Animation set up their
set up their separately to avoid any frictions. इसलिए December 1915 में पुणे at the Pune Tilak held the confession of nationalists to discuss the issue of the home rule. Okay, to discuss the issue of the home rule 1915, and the Tilak League was set up in the April 1916. Okay, 1916 में Tilak League set up हुआ during the Bombay Provincial Conference, and the Bombay Commercial Conference, and the GS Khaparade was a founding member of Tilak League. Okay, President Joseph Kaka and Baptista and the secretary NC Khelkar. Tilak League was restricted to the Maharashtra. Okay, Tilak League was restricted to the Maharashtra, excluding the Bombay city. Tilak League was restricted to the Maharashtra, okay, excluding the Bombay city, and Karnataka and the central provinces. Karnataka and the central provinces appears. It had the 6 branches, and the demand including the Swarajya formation of the linguistic state education in the vernacular languages. Okay, so Tilak League was restricted to Maharashtra में, Karnataka and the central provinces में, and it has the 6 branches. 6 branches था, और इसका मेन जो डिमांड था वो स्वराज्य फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड द एजुकेशन इन द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस. एनिमेशन के होम रूल जो था वो सेटअप हुआ था सितंबर 1916 में. तिलक के सेटअप हुआ था तिलक सेटअप अप्रैल 1916, और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 1916 में सेटअप हुआ था एनिमेशन की होम रूल लीग. ओके, इन आधार है पर ओवर पुणे में एट द रेस्ट ऑफ इंडिया. ओके, covered at the rest of India, Bombay city. It had the 200 branches. 200 branches था, और उसमें तिलक के 6 branches था, tightly था, compact, loosely organized as compared to the Tilak League. Tilak League की comparatively loosely compact था. Okay, and had the George Orundala as the organizing secretary. Okay, as the organizing secretary, and the Sir S. Subramanya Layer. Okay, Sir Subramanya Layer as the honorary president. Subramanya Layers as the honorary president. So फिर से बोलो, 200 branches था. 200 branches was simply organized and compared to Tilak League. Okay, compared to the Tilak League, and had the George Orundala as the organizing secretary. Okay, as the organizing secretary, and Sir S. Subramanya Layer as Sir S. Subramanya Layer as the honorary president. Okay, only as the honoring president. Done. And then even earlier in 1916, some of the best animation impatient followers already set up the home rule league. तो होम रूल लीग ग्रुप सेटअप कर दिया था, যেমন जमनदास और अरविंद, and Bombay newspaper, Young India. Okay, and Young India and All India Propaganda Fund to issue the pamphlet. All India Propaganda Fund to issue the pamphlets. Okay, 200 branches of Basant League had been set up for all over India. Newspaper कौन था? New India and the Commonwealth. और यहाँ पर newspaper कहते हैं Bombay newspaper, Young India, and also set up the All India Propaganda to issue the pamphlet. Okay, and Home Rule League agitation was joined by the Jawaharlal Nehru, Babulal Desai, Chittaranjan Das, Madan Mohan Malviya, and Muhammad Ali Jinnah, Tej Bahadur, Shapru, Rajput Rai. Done. Okay, then हम देखेंगे होम रूल तिलक्स होम रूल लीग हो गया. लखनऊ सेशन ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस. लखनऊ सेशन ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस 1916 में यहाँ पर क्या हुआ था? एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स joined together. Okay, extremists and moderates joined together. They are admitted to the Congress. You know the moderates and extremists. And Congress President Ambika Charan Majumdar. यहाँ पर Congress President कौन था? Ambika Charan Majumdar. Okay, welcome the extremists. And Muslim League and Congress set up joint demand under the Lucknow Pact. Okay, set up the joint demand under the Lucknow Pact and under the Lucknow Pact. Okay, and then the Congress accept that league position as a separate electorate and 19 memorandum, and Muslim were granted the fixed proportion of seat in the legislature at all India provincial level. Okay, legislature at the all India provincial levels. Half of the members of viceroys and the provincial governors executive council should be Indians. Okay, so half of the members of the viceroy and the provincial governors executive council should be Indians. Executive council to be Indian, and executive should be separated from the judiciary, and executive should be separate from the judiciary. Done. हो गया.
Why the home rule agitation faded out by 1919. Lack of effective organizations and common right is the witness were the witness during the 1917 to 18. Okay, were the witness of the 1917 to 18. The modern were pacified by Tilak by talk of reforms. Okay, were pacified by talk of reforms and contained in Montagu statement. Okay, content in Montagu statement of the August 1917. तो मॉडरेट वर्ड पैसिवेटेड बाय टॉक ऑफ रिफॉर्म मॉडरेट रिफॉर्म के बारे में बोल रहा था एंड एक्सट्रीमिस्ट पैसिव रेसिस्टेंस दे रहा था कि टॉक ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस बाय द एक्सट्रीमिस्ट kept the moderates away from the activity from the September. Okay, kept away from the September. तिलक 1918 की बात बोल रहा है क्योंकि 1917 में तिलक 1917 मॉडरेट फिर से रिफॉर्म्स के बारे में बोल रहा है लेकिन 1918 में एक्सट्रीमिस्ट फिर से पैसिव रेसिस्टेंस के बारे में बोल रहा है तिलक had to go abroad in connection with the libel case. Okay, Tilak had to go abroad in connection with a libel case and against the Valentine Cyril, whose book Indian Unrest. In 1920, Gandhi accepted the presidency of the All India Home Rule League. Okay, Gandhi accepted कर रहा था presidency of the All India Home Rule League. All India Home Rule League की presidency accept किया था गांधी and they changed the organization's name. Organization's name की change हो रहा था हाँ ये सही यही ऑर्गेनाइजेशन होम रूल लीग की नेम चेंज होके यही तो PYQ था स्वराज्य सभा. ओके, होम रूल लीग की नेम चेंज होके क्या हुआ था स्वराज्य सभा चेंज द ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड टू द स्वराज्य सभा within a year. However, the league joined the Indian National Congress. Okay. Government response में कहते हैं government calm down the severe repression created especially in Madras में where the students were prohibited from attending the political meeting. जिसकी वजह से student was prohibited from attending the political meeting. In June 1997 animation and her associated BP Wada and coach Arundala were arrested. Okay, as animation arrest करता है as the mark of protest and that is Subramania Iyer denounced his knighthood. Okay, July 1917 Tilak advocated the use of the weapon of the passive resistance. Okay, advocate कर रहा था or civil disobedience if the government refused to release the interest. Okay, मॉन्टेगू डिक्लेरेशन कर रहा था 1917 में अगस्त में और एनिमेशन रिलीज कर दिया सितंबर में जून जुलाई अगस्त सितंबर में रिलीज कर दिया. ओके, जून में एडिट करा एंड अगस्त में उसको नया अध्याय रिलीज कर दिया कहाँ पर सितंबर में. एट द तिलक सजेशन की सजेशन हो रहा था कि बेसिक एनिमेशन वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट. ओके, तिलक की सजेशन थी कि एनिमेशन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड एनिमेशन इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस at the Calcutta session 1917. Then Gandhi's South African experiment. Indigo cultivation in India declined by the beginning of the 20th century because the peasant resistance to the oppressive conduct of the planters. It unprofitable in the world market because of new inventions. National leaders opposition to the cultivation of indigo. The government control over the planters. Which one of the following is a very significant aspect of the Champaran Satyagraha? Active all-Indian participation of lawyers, students, women in the national movement. Active involvement of the Dalit tribal community of India in the national movement. Joining peasant unrest to Indians national movement. Drastic decrease in the cultivation of the plantation crop and the commercial crop. Okay, with reference to the Rowlatt Satyagraha, who is of the following statement is correct. The Rowlatt Act was based on the recommendation of sedition committee. Okay, sedition committee. In the Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to utilize the Home Rule League. Demonstration against the arrival of the Simon Commission coincide with the Rowlatt Satyagraha. Okay, तो यहाँ पर क्या बोल रहे थे Rowlatt Satyagraha who is of the following statement is the correct. Rowlatt Act was based on the recommendation of the sedition committee. Okay, recommendation of the sedition committee and the Rowlatt Satyagraha and the Gandhiji tried to utilize the Home Rule League.
Okay, tried to utilize the home ruling, and the demonstrations against the arrival of the Simon Commission coincide with the ordered Satyagraha. What was the reason? What was the reason for the Mahatma Gandhi to organize a satyagraha on the behalf of the peasant of the Kheda? What was the reason for Mahatma Gandhi to organize a satyagraha on the behalf of the peasant of Kheda? The administrations did not suspend the land revenue collections in spite of a drop. Okay, the administration did not suspend the land revenue collections. Did not suspend नहीं कर रहे the land revenue collection in spite of drop. The administrations proposed introduce the permanent settlement in Gujarat. Permanent settlement in Gujarat. तो क्या बोल रहे हैं पर administration did not suspend the land revenue collection in spite of drop. Okay, the administration proposed to introduce the permanent settlement in Gujarat. Okay, permanent settlement in Gujarat. Next, Mahatma Gandhi said that some of his deepest convictions was reflected in a book titled Unto This Last. The book transformed his life. What was the message from the book that transformed Mahatma Gandhi? So Mahatma Gandhi said that some of his deepest convictions reflected in a book that is titled Unto This Last. The book transformed his life. What is the message from the book that transformed Mahatma Gandhi? Okay, uplifting the oppressed and poor is the moral responsibility of an educated man. Uplifting the oppressed and poor is moral responsibility of an educated man. The good individual is contained in the good of all. The life of celibacy and the spiritual pursuit are essential for a noble life. Okay, the which of the statement is corrected? That's mean uplifting the oppressed and poor is moral responsibility of an educated man. Okay, and the good of individual is contained in the good of all. Okay, the life of celibacy and the spiritual pursuit was essential for a noble life. Then next PIQ में क्या पूछा है? Through light on the significance of thoughts of Mahatma Gandhi in the present time. Through light on the significance of thought of Mahatma Gandhi in a present time. Okay, so in the present time Mahatma Gandhi thoughts through light on significance की बात यहाँ पर बोल रहे हैं. Gandhi in South Africa. Gandhi in South Africa. South Africa में क्या है? Yeah, he went to South Africa. Okay, went to South Africa in 1893 on a year contract to okay कब गया था साउथ अफ्रीका एंड while he was traveling by train की इंसिडेंट किया था एंड ही स्टेड इन साउथ अफ्रीका में स्टेट करके क्या किया था. ओके, he went to South Africa, Durban to Natal provinces. Okay, Durban to Natal provinces in 1893 on a year contract to sort out the legal problems. Okay, on a 1 year contract to sort out the legal problems of Dada Abdullah and a Gujarati merchant. Okay, Dada Abdullah, a Gujarati merchant. तो क्या बोला? He went to South Africa में गया था in 1893 में on a 1 year contract to sort out the legal problem of दादा अब्दुल्ला एक गुजराती मर्चेंट. ओके, गुजराती मर्चेंट की दादा अब्दुल्ला नेम थी. तो उसकी एक लीगल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था साउथ अफ्रीका में और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गांधी जी went to South Africa in 1893 for only 1 year contract. While he was traveling by train from Durban to the Pretoria, he faced racial discriminations. Just गांधी जी साउथ अफ्रीका में कौन सी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था. He voiced his protest. Okay, he raised the voice. Okay, through the protest, through a letter written to the national advertisers. Okay, he voiced his protest through a letter written to the natal advertiser. Okay, natal advertiser को प्रोटेस्ट के लिए एक वॉइस सेंड किया था. ओके, ही स्टेड इन साउथ अफ्रीका में स्टे किया एंड ऑर्गेनाइज किया द इंडियन वर्कर्स टू एनेबल देम टू फाइट फॉर देयर राइट. ओके, ही स्टेड इन साउथ अफ्रीका में स्टे किया टू ऑर्गेनाइज द इंडियन वर्कर्स
मैंने ऑर्कस को ऑर्गेनाइज किया टू एनेबल देम टू फाइट फॉर देयर राइट्स। ओके, टू एनेबल देम टू फाइट फॉर देयर राइट्स। First phase is moderate phase of the struggle. Okay, first phase is the moderate phase of the struggle. 1893 1894 से 1906 1894 से 1906 में फर्स्ट फेज था उसका, फर्स्ट फेज मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल। एंड द सेकेंड फेज फेज ऑफ द पैसिव रेसिस्टेंस, यहाँ पर पैसिव रेसिस्टेंस कर रहा था। द फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड द सत्याग्रह। ओके, सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह, फर्स्ट फेज सेकेंड फेज। ओके, देन हम देखेंगे नेक्स्ट। तो पहले फर्स्ट फेज को समझो। गांधी जी की स्ट्रगल। ओके, गांधी जी का स्ट्रगल की बात यहाँ पर बोल रहे हैं। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन लीड in 1896 during the outbreak of the Boer War. Okay, first phase, that's the moderate phase of the struggle. 1894 से 1894 से 1906, the Gandhi struggle against the disenfranchisement, okay, bill, franchisement bill, okay, disenfranchisement bill and the formation of Indian National Congress। फॉर्मेशन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन किया था। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन किया था। डन। तो डाइसन फ्रेंचाइजमेंट बिल, गांधी जी के स्ट्रगल अगेंस्ट द डाइसन फ्रेंचाइजमेंट बिल एंड द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की बात बोल रहे हैं। ड्यूरिंग दिस फेज, ओके, ड्यूरिंग दिस फेज, the Gandhiji relied on sending the petition and the memorials to the authority in South Africa and in Britain। तो क्या बोला, ड्यूरिंग दिस फेज में क्या होता, टू यूनाइटेड डिफरेंट सेक्शंस। ओके, ड्यूरिंग दिस फेज गांधीजी रिलाइड ऑन सेंडिंग द पिटिशन। ओके, गांधीजी रिलाइड कर रहा था इसके ऊपर, सेंडिंग द पिटिशंस एंड द मेमोरियल्स। ओके, एंड मेमोरियल्स टू द अथॉरिटी को पिटिशन सेंड करके, मेमोरियल्स को सेंड करके साउथ अफ्रीका की अथॉरिटी को इन साउथ अफ्रीका एंड इन ब्रिटेन। ओके, साउथ अफ्रीका एंड इन ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में अथॉरिटी को पिटिशन एंड मेमोरियल्स सेंड करके, ओके, सेंड करके एक्चुअल प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। ओके, टू यूनाइटेड डिफेंस सेक्शंस ऑफ द इंडियंस की डिफेंस सेक्शन को यूनाइटेड करने की बात यहाँ पर आ रहा है। ही सेट अप द नेशनल इंडियन कांग्रेस एंड स्टार्टेड ए पेपर इंडियन ओपिनियन। ओके, टू यूनाइट डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियंस, he set up a national इंडियन कांग्रेस। ओके, क्या सेटअप किया था, नेशनल इंडियन कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप किया था एंड स्टार्टेड ए पेपर इंडियन ओपिनियन। ओके, तो टू यूनाइट द डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन की डिफरेंट सेक्शन को यूनाइट करने के लिए वी सेटअप द नेशनल इंडियन कांग्रेस। ओके, दसवीं इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप किया था, स्टार्टेड ए पेपर स्टार्ट किया था इंडियन ओपिनियन को जानने के लिए। डन। नेक्स्ट, गांधीजी अटेंड। ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, दिस ऑर्गेनाइजेशन लीड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव ट्रीटमेंट of the white people towards the native Africans and Indians। तो क्या बोल रहे हैं, दिस ऑर्गेनाइजेशन लीड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। ओके, क्या लीड कर रहा था, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था अगेंस्ट द ऑप्रेसिव ट्रीटमेंट। ओके, ऑप्रेसिव ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को कर रहा था। ओके, ऑप्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ द व्हाइट पीपल, ओके, एंड टूवर्ड द नेटिव अफ्रीकन एंड इंडियन को लेके व्हाइट पीपल के अगेंस्ट में एक ऑप्रेसिव ट्रीटमेंट एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। ओके, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया था। देन ही पब्लिश्ड 1896 में ही पब्लिश्ड द ग्रीन पैम्पलेट। ओके, he published the green pamphlet which is grievance of the British Indians in South Africa and an appeal to the Indian public। In 1896 he published the green pamphlet। okay, green pamphlet published किया था which is
which is the grievance of the British Indians. Okay, British Indians की grievance था in the South Africa and an appeal to the Indian public. Okay, and appeal to the Indian public. Done. That's when in 1896 में क्या पब्लिश किया था? द ग्रीन पैम्पलेट को पब्लिश किया था, which is grievance of the British Indian. British Indians की grievance था in the South Africa. अफ्रीका में British Indians का grievance था. Okay, and an appeal to the Indian public. and Indian public के लिए एक अपील था. तो साउथ अफ्रीका में तो क्या बोला मैंने? ग्रीन पैम्पलेट के बारे में बोला, व्हिच इज द ग्रीवियंस था ब्रिटिश इंडियंस के लिए, ब्रिटिश इंडियंस की ग्रीवियंस था साउथ अफ्रीका में, एंड एन अपील था इंडियन पब्लिक में भी अपील था ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द बोर वॉर. ओके, ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द बोर वॉर इन 1899, गांधी gathered around one 1100 Indians, around 1100 Indians, and organized the Natal Indian ambulance crop for British. Okay, crop for British. So during the outbreak of the Boer War in 1919 में जो बोर वॉर हुआ था उस टाइम में गांधी gathered around 1100 Indians. Okay, gathered around 1100 Indians गैदर हुआ था, ऑर्गेनाइज किया था नेटल इंडियन एम्बुलेंस. क्या ऑर्गेनाइज किया था? नेटल इंडियन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइज किया था जो क्रॉप्स को, ब्रिटिश क्रॉप्स को एम्बुलेंस करके वो ले आएगा. डन. तो गांधी अटेंड देन गांधी अटेंड किया था एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय, उनसे इन्फ्लुएंस्ड किया था एंड द जॉन रस्किन बुक के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर. देखो, गांधी अटेंड इन 1901 कलकत्ता कांग्रेस सेशंस. तो गांधी अटेंडेड द 1901 कलकत्ता कांग्रेस सेशन अटेंड किया था. प्रेसिडेंट था डब्ल्यू.सी. वाचा. ये बार प्रेसिडेंट था डब्ल्यू.सी. वाचा. ओह, एंड दिस वाज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट इन द इंटरनेशनल विद द इंटरनेशनल कांग्रेस के साथ फर्स्ट कॉन्टैक्ट यही था कि गांधी अटेंड द 1901 सेशंस, कलकत्ता कांग्रेस सेशंस. जो प्रेसिडेंट था डब्ल्यू.ई. Wacha, and this was the first contact with the International Congress. He even succeed in getting a resolution passed on the condition of the Indians in the South Africa. Okay, he even succeeded in getting a resolutions passed on the conditions of Indians. Okay, इंडियन साउथ अफ्रीका में इंडियन की क्या कंडीशन है, इस कंडीशन को इंडियन की क्या कंडीशन है, इस कंडीशन को जानने के लिए एक रिजोल्यूशन पास किया था. और इस रिजोल्यूशन को पास करने में गांधी जी सक्सेस भी हुआ था. ओके, गांधी जी सक्सेस हुआ था इस सेशन में, कलकत्ता सेशन 1901 जो डब्ल्यू.सी. वाचा प्रेसिडेंट था. दिस वाज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द जॉन रस्किन. ओके, इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन रस्किन एंड पीएचिंग ऑफ द रस्टिक लाइफ. ओके, रस्टिक लाइफ पीएचिंग किया था. एंड गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड द फोनिक्स फार्म नियर द दुर्बन. ओके, Phoenix farm near the Durban. Here, he trained the disciplined cadres on non-violent satyagraha. Okay, non-violent satyagraha and peaceful self-resistance, involving peaceful violations of certain laws and mass courting of arrest and occasional hurtle. Okay, influenced by the John Ruskin. So, influenced by the John Ruskin, PHing of rustic life. And Gandhi organized the Phoenix farm near the दुर्बन के नियर में ऑर्गेनाइज किया था फोनिक्स फार्म. ओके, हियर ही ट्रेन डिसिप्लिन कैडेट्स. ओके, डिसिप्लिन कैडेट्स और नॉन वायलेंट सत्याग्रह में डिसिप्लिन कैडेट्स ट्रेन किया था. ही ट्रेन द डिसिप्लिन कैडेट्स ऑन द नॉन वायलेंट सत्याग्रह एंड पीसफुल सेल्फ रेसिस्टेंस. ओके, तो इन्वॉल्विंग द पीसफुल वायलेंस ऑफ सर्टेन लॉ में पीसफुल वायलेंस में इन्वॉल्व हुआ था एंड मास कोर्टिंग ऑफ अरेस्ट एंड ओकेशनल हड़ताल. ओके, मास कोर्टिंग ऑफ अरेस्ट एंड ओकेशनल हड़ताल. इन द जॉन रस्किन बुक ऑन द इकोनॉमिक्स अनटू द लास्ट. ओके, क्या बोल रहे हैं? जॉन रस्किन बुक क्या वो इकोनॉमिक्स के ऊपर जॉन रस्किन ने कुछ बुक की नेम बुक एक्चुअली क्रिएट किया था, रिटन किया था कि अनटू द लास्ट के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर. ओके, Gandhi hits upon the idea of the starting a farm. Okay, and leading a
community life. Okay, leading community life. So जॉन रस्किन बुक से इन्फ्लुएंस भी हुआ था, और इन्फ्लुएंस होकर फोनिक्स फार्म क्रिएट किया था नियर दुर्बन. ओके, एंड हियर ही ट्रेन द डिसिप्लिन कार्ड रेस ऑन द non-violent peaceful resistant. Okay, so in the John Ruskin book on the economic unto the last, Gandhi hit upon the idea of starting a farm and leading a community life. Starting a farm and leading community life. Farm and leading a community life. Done. हो गया. Next. Unto the last. अब हम सेकंड पेज में जा रहे हैं. सेकंड पेज में क्या हो रहा था? सेकंड पेज की बातें अब बोल रहे हैं. यहाँ पर न्यू लेजिस्लेशन इन द साउथ अफ्रीका. गांधी फॉर्म्ड द पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन. गांधी क्या फॉर्म किया था, एंड गवर्नमेंट जेल भी दे दिया था गांधी को. एंड ही सेटअप क्या किया था, एंड कंपेनिंग अगेंस्ट द रिस्ट्रिक्शंस एंड द कंपेनिंग अगेंस्ट द पोल टैक्स. रिस्ट्रिक्शन एंड द पोल टैक्स. ओके, न्यू लेजिस्लेशन क्या इम्पोज किया था. ओके, पोल टैक्स की 3 पाउंड्स. यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर. ओके, इंडियन रिलीफ एक्ट. गांधी रिटर्न टू द इंडिया. ओके, डन. देखो सेकेंड पेज में द गांधी क्या है, सत्याग्रह अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. ओके, सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1906. दैट इज द एसेटिक रजिस्ट्रेशन बिल. ओके, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल. तो एक एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल लॉन्च किया था साउथ अफ्रीका में, जो जिसके अगेंस्ट में सत्याग्रह अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में सत्याग्रह लॉन्च हुआ था. ओके, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में सत्याग्रह लॉन्च हुआ था. और नेक्स्ट, a new legislation in South Africa always made it compulsory for Indians. Okay, always made it the compulsory for Indians. तो साउथ अफ्रीका में एक न्यू लेजिस्लेशन क्रिएट हुआ था, और इस न्यू लेजिस्लेशन में साउथ अफ्रीका में इंडियंस के लिए कंपलसरी कर दिया था कि एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल की वजह से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए. Registration compulsory for Indians, and they are to carry certificate of registration, with their fingerprint. Okay, a new legislation in the South Africa में एक न्यू लेजिस्लेशन क्रिएट हुआ था, जो ऑलवेज मेड इट द कंपलसरी फॉर इंडियंस के लिए कंपलसरी सिचुएशन है. एंड दे आर टू कैरी द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद देयर फिंगरप्रिंट. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट क्या होगा, विद देयर फिंगरप्रिंट में रहेगा. ओके, तो द गांधी फोर्स द पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन. गांधी फॉर्म किया था द पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन फॉर्म किया था टू कंडक्ट द कंपेनिंग ऑफ द डिफाइंग द लॉ. ओके, टू कैरी द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद देयर फिंगरप्रिंट. ओके, विद देयर फिंगरप्रिंट. गांधी फॉर्म द पैसिव रेसिस्टेंस फॉर्म किया था. पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन. गांधी फॉर्म द पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशंस to conduct the campaigning of defying the law, and suffering all the penalties resulting from such a define. Okay, so Gandhi formed the passive resistance association formed किया था to conduct the campaigning of define the law. Okay, to conduct the campaigning of define the law and suffering all the penalties. Suffering किया था all the penalties resulting from such defines. The government jailed किया था गांधी को and others को who refused. गवर्नमेंट जेल द गांधी को जेल में दिया था, एंड अदर्स को भी जेल किया था who refused to register themselves. जो रजिस्टर करने में रिफ्यूज किया उसको जेल किया. He set up the Tolstoy farms. Okay, he set up Tolstoy farms in 1910 में सेटअप किया था टॉल्स्टॉय फार्म्स एज द सत्याग्रहीस कंटिन्यू टू कोर्ट अरेस्ट एंड फंड. ओके, एंड फंड फॉर द सपोर्टिंग द फैमिलीज ऑफ द सत्याग्रहीस. ओके, स्टार्टिंग रनिंग आउट. तो ही सेटअप द टॉल्स्टॉय फार्म सेटअप किया in 1910 में, and as the सत्याग्रहीस continued to court arrest. Okay, continue to court arrest, कोर्ट से अरेस्ट कर रहा था.
They continue to quote rates and funds for supporting the families and fund ले रहा था supporting for the families के supporting के लिए of the सत्याग्रह and starting running out. So campaigning against the restrictions of the Indian migration on the Indian migrations. Okay, campaigning against the restriction of India से जो migrate हो गए साउथ अफ्रीका में जा रहा था उसके अगेंस्ट में campaigning भी कर रहा था. तो new legislation imposing the restriction. New legislation imposing restriction on Indian migrations. New legislation imposing restriction on Indian migration. Indians defined this law by crossing over from one provinces to the another, and by refusing produce license. Campaigning against the restriction इंडियन माइग्रेशन की अगेंस्ट में इंडियन माइग्रेशन जो हो रहा था उसको रेस्ट्रिक्शन करने के लिए कंपेनिंग जो किया था उसके बारे में न्यू लेजिस्लेशन इम्पोजिंग द रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन दिया था. द इंडियन डिफाइंड दिस लॉ by crossing over from one provinces to the another and refusing the produce license. Okay, refusing the produce license one provinces to another by crossing over from one provinces to another and by refusing to produce the license. Okay, campaign against the poll tax के against भी campaign किया था and the invalid of Indian marriage को भी invalid कर दिया था. Invalidation of the Indian marriage. Okay, campaigning against the poll tax के against campaign किया था and the invalidation of Indian marriage की invalidation किया था. A poll tax of the 3 pound की a poll tax of 3 pound was imposed on all indentured Indians. Okay, a poll tax of 3 pounds were imposed on all indentured Indians. Next, Supreme Court order who is invalidated all marriages not conduct according to the Christian rites and registered by the register of marriage. Okay, drew anger of Indians and other who are not the Christians. तो क्या बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था who is invalidated all marriages not conduct according to the Christian rites and registered by the register of marriage to the anger of Indians and the other who were not Christians. Indian Relief Act 1914. Eventually, through a series of negotiations involving Gandhi, Lord Hardinge, and C.F. Andrew, and General Sturm, an agreement was reached by which the government of the South Africa conceded the major India demand and promised a treat. The issue of Indian immigration in the sympathetic manner. Indian immigration in a sympathetic manner. Indian Relief Act 1914 eventually through a series of negotiations involving Gandhi, Lord Hardinge, and the C.F. Andrews, and the General Smoot, and agreement was reached by which of the government South Africa conceded the major Indians demanded and promised to treat the issue of Indian immigration in the sympathetic manner. Gandhi returned India in January 1950. Okay, तो हो गया गांधी की एक जर्नी. व्हाट गांधी जी लर्न फ्रॉम हिज साउथ अफ्रीकन एक्सपेरिमेंट से गांधी जी क्या लर्न किया था वो हम देखेंगे कि क्या प्रिपेयर्ड गांधी जी. ओके, प्रिपेयर्ड गांधी जी प्रिपेयर हो गया था लीडरशिप के लिए ऑफ इंडियन नेशनल स्ट्रगल. Gandhiji also had the opportunity. Okay, Gandhiji had the opportunities of leading Indians. Okay, build up his faith in the capacity of Indian masses. An opportunity for involving. Okay, Gandhi learned to communicate effectively. Gandhi utilized the media. Okay, so क्या बोल रहे हैं यहाँ पर prepared गांधी जी for leaderships के लिए प्रिपेयर हो गया था of the Indian national struggle. Okay, Indian national struggle के लिए लीडरशिप के लिए प्रिपेयर हो गया था गांधी जी. Then Gandhi ji also had the opportunity of leading Indians belonging to different religions. Okay, Gandhi ji also had the opportunity. गांधी जी के पास अपॉर्चुनिटी था of leading Indian को लीडिंग करना belonging to different religions.
जो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग हो रहा था, कुछ डिफरेंट रिलीजन से जो बिलोंग हो रहा था, ओके, डिफरेंट रिलीजन से जो बिलोंग हो रहा था, गांधी ऑल्सो हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ लीडिंग इंडियंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, different regions, different social classes and the different pretenders. Okay, so Gandhiji also had the opportunity. गांधी जी के पास अपॉर्चुनिटी था अब लीडिंग इंडियंस को लीडिंग करने की अपॉर्चुनिटी था. ओके, बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, जो डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट जेंडर्स की जितनी सारे इंसान था, उस जितनी सारे इंसान के बीच में गांधी जी एक इंसान था जो जिसके बाद had the opportunity leading the all types of persons. Build up his faith in the capacity of Indian masses. Indian masses के बीच में एक faith और faith build up किया था. Okay, to participate in and sacrifice for a cause that moved them. Okay, build up his faith in the capacity of Indian masses to participate in and sacrifice for a cause that moved them. An opportunity for evolving his own style of politics and leadership. एक अपॉर्चुनिटी था, एन अपॉर्चुनिटी फॉर इवॉल्विंग हिज ओन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स. ओके, हिज ओन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी इवॉल्व हुआ था एंड लीडरशिप इवॉल्व हुआ था. ओके, अपॉर्चुनिटी इवॉल्व हुआ था एंड लीडरशिप इवॉल्व हुआ था, इसके बारे में बोल रहा. गांधी जी लर्न टू द कम्युनिटी इफेक्टिवली विद द मासेस. गांधी जी लर्न किया था टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, सॉरी, गांधी लर्न टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द मासेस के लिए मासेस के साथ कैसे कम्युनिकेट करना था, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना था, उसके बाद उसके लिए लर्न किया था. ओके, गांधी यूटिलाइज द मीडिया. गांधी यूटिलाइज किया था मीडिया को, इंक्लूडिंग द न्यूज़पेपर्स, टू स्प्रेड हिज मैसेज एंड मोबिलाइज सपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही स्टार्टेड इंडियन ओपिनियन इन 1903 फॉर द सेम. ओके, गांधी यूटिलाइज द मीडिया को यूटिलाइज किया था, इंक्लूडिंग द न्यूज़पेपर टू द स्प्रेड हिज मैसेज. ओके, इंक्लूडिंग द न्यूज़पेपर टू स्प्रेड हिज मैसेज and mobilized support. Okay, and mobilized किया था support को. For example, he started Indian opinion in 1903 for the same. तो क्या बोला, गांधी जी utilized the media including the newspaper to spread his message. Okay, newspaper यूज किया, मीडिया को यूज किया और his message को spread करने के लिए and mobilize support को mobilize करने के लिए. Okay, for example, he started Indian opinion. He started Indian opinion in 1903 for the same. देखिए, गांधी's major ideology. इसका मेजर आइडियोलॉजी क्या था. ओके, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, मीन्स ऑफ सिक्योरिंग राइट. ओके, सर्वोदय, स्वराज, ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट एंड द स्वदेशी. ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट एंड द स्वदेशी. सो गांधी जी का मेजर आइडियोलॉजी क्या था. मेजर आइडियोलॉजी में था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. ट्रूथ भी रहेगा और नॉन वायलेंस भी रहेगा. ओके, ट्रूथ भी रहेगा और नॉन वायलेंस भी रहेगा. डन. That's mean truth and non-violence and the satyagraha. Okay, truth, non-violence and सत्याग्रह and means of securing rights को secure करना इसका main means था. and the सर्वोदया. Okay, सर्वोदया की बात यहाँ पर बोल रहे हैं. स्वराज and the trusteeships and trustee of trust. Okay, trustees of trust and the स्वदेशी. तो फिर से बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 आइडियोलॉजी की बात यहाँ पर मेंशन किया है. ओके, 8 आइडियोलॉजी की बात यहाँ पर मेंशन किया क्या. ट्रस्ट एंड नॉन वायलेंस. क्या, फिर से बोलो, ट्रस्ट एंड नॉन वायलेंस. ट्रस्ट भी रहेगा, नॉन वायलेंस भी होगा. ओके, सत्याग्रह भी मेंटेन रहेगा. सत्याग्रह भी मेंटेन रहेगा. मीन्स ऑफ सिक्योरिंग राइट को सिक्योर करना पड़ेगा. सर्वोदय मानी एवरीवन. स्वराज ट्रस्टीशिप एंड ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट एंड द स्वदेशी. ओके, सो फिर से इसका मीनिंग देखो. ट्रस्ट एंड नॉन वायलेंस, दैट मीन the twin cardinal element of Gandhian ideology. The twin cardinal element of the Gandhian ideology, twin cardinal element, truth and non-violence. Okay, Satyagraha, it entails channeling the purest soul. Okay, purest soul को channeling करने के लिए सत्याग्रह होना चाहिए. जो soul force against every injustice, oppression and the exploitations. Okay, Satyagraha, it entails channeling the purest soul force. Okay, purest soul force against every injustice. जहाँ पर भी injustice हो रहा है उसको purest जो soul है, purest soul को क्या करना चाहिए, channeling करेगा. ओके,
इंडस्ट्रीज ऑपरेशन एंड एक्सप्लोरेशन के अगेंस्ट जो प्योरिंग सोल्स है उस प्योरिंग सोल को चैनलिंग करेगा। मीन्स ऑफ द सिक्योरिंग राइट, it is it is a mean it is a mean of securing right. Okay, means of the securing rights, that's mean it is a mean of securing right to a personal pain while causing no harm to others. Okay, means of securing right, it is a means of securing right to a personal pain who is causing no harm to others. Done. Mean it is the mean of securing right. Okay, it's a mean of securing right को secure करना, पर्सनल पेन ओ, तो ये दैट्स मीन पर्सनल पेन होगा और कॉजिंग नो हार्म ऑफ अदर्स, इसकी वजह से पर्सनल पेन की वजह से अदर्स को कोई हार्म नहीं होगा। সর্বদয়া, সর্বদয়া दैट्स मीन সর্বদয়া is a phrase that means universal uplift or progress of all. Okay, সর্বদয়া दैट्स मीन সর্বদয়া is a phrase that mean यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट होगा और प्रोग्रेस ऑफ ऑल, एवरीवन के लिए प्रोग्रेस भी होगा। सर्वदया इज ए फेस, ओके, इज ए फेस दैट मीन यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट भी होगा और प्रोग्रेस ऑफ ऑल, एवरीवन के लिए प्रोग्रेस भी होगा। स्वराज, गांधी जी गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एंटायर रेजोल्यूशंस दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। स्वराज दैट्स मीन गांधी जी गिव it Gandhi give it the meaning of an entire revolutions. Okay, give it the meaning of entire revolutions that cover all aspect of life. Okay, trusteeship the Gandhiji proposed trusteeship as a socio-economic theory, socially economically theory को propose किया था। ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट, ही एस्टेब्लिश्ड ए मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया था फॉर वेल्दी पीपल के लिए टू सर्व एज ए ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट। ओके, वेल्दी पीपल के लिए टू सर्व एज ए ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट दैट केयर फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट इज एस्टेब्लिशेस ए मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया था फॉर वेल्दी पीपल के लिए एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया था टू सर्व द ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट। ओके, ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट को सर्व करने के लिए दैट केयर फॉर द जनरल वेलफेयर, जनरल वेलफेयर को केयर करेगा ऑफ द पीपल के। स्वदेशी इज द एम्फेसाइज ऑन एक्टिंग both the politically and economically within one's local community. Okay, Swadeshi is the emphasis on acting both politically, emphasis on acting both politically and economically, within local community के बीच में। Done. नेचर ऑफ गांधीयन मास मूवमेंट, गांधीयन मास मूवमेंट की नेचर की बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या नेचर था। रेस्टेड ऑन डिफाइंड सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, लिंक्ड, एप्रिशिएटेड, कंस्ट्रक्टिव, स्पेसिफिक, स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन। ओके, नेचर ऑफ द गांधीयन मास मूवमेंट रेस्टेड ऑन स्पीड, स्ट्रेंथ एंड सेल्फ सैक्रिफाइसेस ऑफ मासेस की सेल्फ सैक्रिफाइसेस एंड स्पिरिट को स्ट्रेंथ करना। डिफाइंड मास मूवमेंट को डिफाइन करना एंड हैज द आइडियोलॉजिकल बेस, एंड हैज करेगा आइडियोलॉजिकल बेस को। सत्याग्रह द फिलोसॉफी ऑफ एक्शंस, ए फिलोसॉफी ऑफ एक्शंस। ओके, सत्याग्रह इज द फिलोसॉफी ऑफ एक्शंस, इट इज द नॉन वायलेंस, लिंक्ड मास मूवमेंट टू द मीन्स एंड एंड्स। ओके, लिंक करेगा मास मूवमेंट टू मीन्स एंड एंड्स को लिंक करेगा मास मूवमेंट के साथ। appreciated the strength and weakness of the masses. Okay, appreciate भी करेगा strength and weaknesses of masses की strength को और weakness को appreciate करेगा, strength को and weakness को appreciate करेगा। and constructive program, okay, constructive program क्या है, constructive होगा। specific kind of controlled mass movement, strategy of struggle, trusted struggle based on pressure and the compromise. What is the nature of the mass movement? Rested on the speed, strength and self sacrifice of masses की self sacrifices strength को स्पीड करके डिफेंड करके मास मूवमेंट हैज द आइडियोलॉजिकल बेस, मास मूवमेंट को डिफेंड करके और आइडियोलॉजिकल बेस क्रिएट करेगा। सबकी फिलोसफी ऑफ एक्शन की फिलोसफी है
नॉन वायलेंस होगा linked mass movement to means and needs, and means that's mean what is the way to achieve the goals, and what you will achieve it. What means and needs. Appreciated, that's mean स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ मैसेज की स्ट्रेंथ को मैसेज की वीकनेस को दोनों को ही अप्रिशिएट करना, मैसेज की स्ट्रेंथ को और वीकनेस को दोनों को अप्रिशिएट करना। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, प्रोग्राम को क्या करना, कंस्ट्रक्टिव करना। ओके, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंट्रोल्ड मास मूवमेंट। ओके, स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंट्रोल्ड मास मूवमेंट, कंट्रोल का मास मूवमेंट को स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंट्रोल मास मूवमेंट की बात यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, स्ट्रैटेजी ऑफ स्ट्रगल, ट्रस्ट स्ट्रगल बेस्ड ऑन द प्रेशर एंड द कॉम्प्रोमाइज। किसके ऊपर बेस होगा, प्रेशर एंड कॉम्प्रोमाइज के ऊपर बेस होगा। गांधी अर्लियर एक्सपेरिमेंट इन इंडिया, इंडिया में अर्ली एक्सपेरिमेंट किया गया था गांधी की। चलो देखो, 3 एक्सपेरिमेंट था, चंपारण सत्याग्रह। ओके, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी की फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज द चंपारण सत्याग्रह। ओके, एंड द Ahmedabad mill strike, first hunger strike. Okay, Ahmedabad mill strike and the first hunger strike, 1918. Not against the British. Ahmedabad mill strike, the first hunger strike, and the Kheda Satyagraha. Kheda Satyagraha, first non-corporation. Okay, first civil disobedience movement, the Champaran Satyagraha. Ahmedabad mill strike, the first hunger strike, 1918. Not British against the British, and Kheda Satyagraha in 1918 में first non-corporation 2. ओके, चंपारण सत्याग्रह में क्या इशू था वो हम देखेंगे। इशू अंडर प्लेग बॉन्ड एंड इशू ड्रॉप्ड इन 1918 में ड्रॉप आया था। ओके, खेदा सत्याग्रह में 1918 में ड्रॉप आया था। द क्रॉप फील्ड, द खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात की खेदा डिस्ट्रिक्ट में ड्रॉप फील्ड हो गया था। ओके, द इशू, द यूरोपियन planters had been forcing the peasant to grow indigo on 3/20 part of the total land called the तीन काटा system. Okay, the European planters had been forcing the peasant को force कर रहा था। European planters had been forcing the peasant को force कर रहा था to grow indigo grow करने के लिए on 2/20 part of the total land called the तीन काटा system. ओके, तीन काटा सिस्टम, जैसे 20 की 3 पार्ट में, अगर एक लैंड को 20 पार्ट में हम डिवाइड कर दिया तो उसके 3 पार्ट में हम क्या इंडिगो ग्रो करने की कोर्स था। ओके, डन, तीन काटा सिस्टम। व्हेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी क्या होता, गांधी जी was requested and finally British authority permitted. क्या permit? The government appoint a committee. Then Gandhiji was able to convince the authority that thin kata system should be abolished. As a compromise with the planters, he agreed that only 25% of money, others leaders who joined him. So when toward the end of the 19th century की end में German synthetic dyes replaced the indigo को replace कर रहा था। and toward the end of the 19th century की end में German synthetic dyes the replaced indigo replace कर रहा था, and the European planters demanded the high rent and the illegal dues from the peasant. Okay, so when toward the end of the 19th century की end में German synthetic dyes replaced indigo replace कर रहा था, and European planters demand high rent and the illegal dues from the peasant. Gandhi was requested by the Rajkumar Shukla, a local man, and Rajkumar Shukla local man था, उस local man की request में गया था to took into the problem of the farmers in the context of the indigo planters of the Champaran, बिहार के चंपारण में। ओके, बिहार के चंपारण में समझो, बिहार के चंपारण में जो इंडिगो प्लांटर्स की जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को देखने के लिए गांधी जी राजकुमार शुक्ला की रिक्वेस्ट में गया था। ओके, फाइनली ब्रिटिश अथॉरिटी परमिटेड द गांधी टू मेक एन इंक्वायरी।
permitted Gandhi to make an inquiry. Okay, finally British authority permit किया था गांधी को कि एक inquiry create करें. Okay, now the government appointed a committee to go into the matter and nominated Gandhi as a member. Okay, as a member. Okay. Now the government appointed a committee. एक committee appoint किया था to go into the matter में जाने के लिए and nominated Gandhi as a member. चंपारण एग्रेरियन कमेटी के मेंबर कर दिया था गांधी जी. ओके, गांधी जी मेंबर कर दिया था. गांधी was able to confine the authority को कन्विंस किया था that the तीन काठा सिस्टम should be abolished होना चाहिए and that the peasant should be compensated for the illegal dues extracted from them. Okay, that the peasants would be compensated for the illegal dues extracted from them. Okay, as a compromise with the planters, he agreed that only 25% of the money taken should be compensated. Okay, only 25% money taken should be compensated. Companion Agrarian Act of the 1970 compensation की बात थी. Okay, as a compromise with the planters, he agreed that only 25% of the money taken should be compensated होना चाहिए. Companion Agrarian Act 1970. Other leader who joined him the Rajendra Prasad and the Majaral Haq and the Mahadev Desai and the Narhari Parkhe and the JP Kripalani. Okay, JP Kripalani के बाद यहाँ पर बोले इशू एंड देना हो गया कंप्लीट. अब नेक्स्ट देखो इशू ऑफ द प्लेग बोनस. ये पर क्या हुआ था इन द मार्च 1980 में. ओके, intervened the dispute. Mill owner wanted to withdraw. Okay, Gandhi to bring pressure on the mill owner. Gandhi persuaded the mill owner, but mill owners taking advantage. The breach of agreement. Gandhi asked workers in the tribunal awarded. Okay. In March 1918, Gandhi intervened in a dispute between the cotton mill owners of Ahmedabad and the workers about the issue of the discontinuations of the plague bonus. Okay, in March 1918, the Gandhi intervened in a dispute between the cotton mill owners of Ahmedabad and the workers about the issue of the discontinuation of the plague bonus. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर In March 1918, Gandhi intervened in a dispute between the cotton mill owners of Ahmedabad and the workers about the issue of the discontinuation of the plague bonus. The mill owners wanted to withdraw the bonus. Bonus को withdraw कर देगा. Okay, the worker was demanding a rise of 50% in their wages so that they could manage in the time of the war time. The mill owner were ready to give only 25% wages hike. 25% wages hike. The workers went on strike. The British collector, who feared a shutdown, asked Gandhiji to bring pressure on the mill owner and work out a compromise. Gandhiji persuaded the mill owners and the workers to agree to arbitration by a tribunal. Then, but the mill owners, taking advantage of the strike, withdrew from the agreement. They offered a 20% bonus and threatened to the dismiss who did not accept it. The breach of the agreement was treated by the Gandhiji as a very serious affair. Then he advised workers to go on a strike. The breach of the agreement was treated by Gandhiji as a very serious affair, and he advised the worker to go strike. Anshona Ben Sarabhai was one of the main lieutenants of Gandhiji in his the struggle.
He was her brother Ambala Sarabhai. Ambala Sarabhai was one of the main adversaries. One of the main adversaries. Okay, Gandhi asked the worker to go on a strike and demand a 35% increase in the wages instead of the 15%. 35% increase in the wages instead of the 15%. Gandhi advises the workers to remain non-violent while on strike when negotiations with the mill owners did not progress. He himself undertook a fast unto death, his fast, uh, fast unto death to strengthen the revolt. In the end, the tribunal awarded the workers the 35% wages hike. In March 1918, Gandhi intervened in a dispute between cotton mill owners of Ahmedabad के cotton mill owners के बीच में and the workers about the issue of discontinuation of the plague bonus. Discontinuation of the plague bonus. The mill owners wanted to withdraw the bonus. And the worker over the demand a rise of 50% in their wages. Okay, the mill owners wanted to withdraw the bonus. The workers were demanding a rise of 50% of their wages so that they could manage that in the time of wartime inflations. The mill owners were ready to give only 25% wages hike. The worker went on strike. The British collector, who feared a shutdown, asked Gandhiji to bring pressure on the mill owner and work out a compromise. Gandhi persuaded the mill owners and the workers to agree to arbitrations by tribunals. The mill owners taking advantage of a strike withdraw from the agreement. Okay, they offered a 20% bonus and threatened to dismiss those who did not accept it. The breach of agreement was treated by Gandhiji as a very serious affair, and he advised the workers to go on strike. Anshua Behen Sarabhai was one of the main lieutenant of the Gandhiji in the struggle of which her brother Ambela Sarabhai was one of the main adversaries. Gandhi asked the worker to go on a strike and demand a 35% increase in the wages. Okay, an instant of 50%. Gandhi advised the worker to remain non-violent while on strike. When negotiations with mill owners did not progress, he himself undertook a fast unto death to strengthen the worker revolt. In the end, tribunal awarded the workers a 35% wage hike. Tribunal awarded and the workers a 35% wage hike. अब हम देखेंगे खेता सत्याग्रह. ओके, खेता सत्याग्रह issue dropped in 1918. Okay, dropped in 1918. The crop failed in Kheda district of Gujarat. गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप फेल हो गया था 1918 में. ओके, 1918 में. तो अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू कोड क्या हुआ था? द गुजरात सभा गवर्नमेंट remained adamant and threatened. Okay, Gandhi asked the farmer सरदार पटेल की बात यहाँ पर हुई नॉन वायलेंट टैक्सेस टेस्ट किया था. गुड राबी क्रॉप्स वीकेंड. ओके, तो देखो क्या क्या हो रहा था यहाँ पर. एक्ट द रेवेन्यू कोड इफ द yield was less than 1/4. Okay, yield was less than 1/4. The normal produce, the farmer were entitled to the total remission of the land revenue. According the revenue code, if the yield was less than 1/4 of the normal produce, the farmer were entitled to the total remission of the land revenue. Okay, so क्या? According to the revenue code, if the yield was less than 1/4 of the normal produce, तो normal produce का 1/4 पार्ट में था, the farmer were entitled to the total emissions of the land revenue. land revenue की total emission की बात यहाँ पर remission की बात यहाँ पर बोल रहे हैं. गुजरात सभा गांधीजी become president. गुजरात सभा में गांधीजी become president. Okay, गांधीजी become president and consisting of the peasant and submitted the petition to the highest governing authority of the
provinces and requesting that the revenue assessment for the year 1990 be supported. The government remained adamant and threatened to seize the property of the farmers if the taxes were not paid. Okay, the government remained adamant and threatened to the seize of the property of the farmers if the taxes were not paid. Okay, Gandhi asked the farmers not pay the taxes. Asked the farmers and not pay the taxes. Along with his colleague, organized the tax revolt. The different ethnic caste community that had a support. The revolt was remarkable in that discipline and unity were maintained. When non-payment of taxes, the government seized the farmers' personal property. Okay, government seized the farmers' personal property, land, and their livelihood. Tunkeda show a good rabi crop, which weaken the case of remissions. Thus, Satyagrahis also showed the sign of the existence. Moreover, the government had also issued the instructions that the revenue should be recovered only from those who had the capacity to pay. In the view of these developments, Gandhi decided to call off the aggression. So, क्या बोल रहा था यहाँ पर? According to the revenue code, if the yield was less than the one fourth, okay, the yield less than the one fourth, the normal produce, the farmer were entitled to the total remission of the land revenue. Okay, entitled to the total remission of the land revenue. If the yield was less than 1/4 of the normal produce, the farmer were entitled to the total remissions of the land revenue. The Gujarat Sabha became the president. Gandhiji became the president. The Gujarat Sabha, Gandhiji became the president, consisting of the peasants submitted petition to the highest governing authority. Submitted petition to the highest governing authority of the provinces. Highest governing authority of the provinces requesting that the revenue assessment for the year 1919 be suspended. The government remained adamant and threatened to seize the property of the farmers if the taxes are not paid. Gandhi asked the farmer not to pay the tax. Sardar Patel, along with his colleague, organized the tax revolt, which the different ethnic and the caste community of the Kenya supported. The revolt was remarkable in that discipline, and unity was maintained. When non-payment of the taxes, the government seized the farmer personal property, land, and the livelihood. Soon, Kheda saw a good rabi crop, which weakened in the case of the remissions. The Satyagrahis also showed the sign of the executions. Moreover, the government had also issued instruction that revenue should be recovered, and only from those who had the capacity to pay. In the view of this development, the Gandhiji decided to call off the agitations. Rowlatt Satyagraha, 1919. To protect against, in 1917, Rowlatt Act, official name, continuation of wartime, trial of offence, proposed and authorizations, detention with restriction on, done. तो क्या मैं बोल रहा था? Rowlatt Satyagraha, to protest against the Rowlatt Act, Gandhiji launched an all India Satyagraha for the first time. Okay, in 1970, the government of India had appointed a committee under the chairperson of the Justice Sindhya Rowlatt to investigate the revolutionary crime in the country and recommended the measures to suppress it. Government of India had appointed a committee under the chairmanship of Justice Sindhya Rowlatt to investigate the revolutionary crime in the country and recommended the measures to suppress it. The Rowlatt Act, official name, the Anarchical and the Revolutionary Crime Act. Okay, Anarchical and the Revolutionary Crime Act of 1919. On the basis of the recommendations, this recommendation, this new bills provided for the continuation of wartime
restriction. Continuation of wartime restriction. Trial of offence by special court composed of high three high court judges that the no appeal could be made against the decision of the court. Okay. Continuation of wartime restrictions. Trial of offence by special court composed of three high court judges that the no appeal could be made against the decision of this court. Proposed authorizations of the government to search and arrest without the warranty. Okay. Proposed authorization of the government to search and arrest without the warranty. Detention without trial of the up to 2 years. Restriction on civil liberty. Restrictions on freedom of the speech, assembly and the press. फिर से देखो Rowlatt Satyagraha to protest against the Rowlatt Act to Gandhiji launched All India Satyagraha for the first time. In 1917, the government of India had appointed a committee appointed किया था under the chairmanship of the Justice Sindh Rowlatt to investigate the revolutionary crimes in the country and recommended the measures to suppress it. Rowlatt Act, the official name, the Anarchical and the Revolutionary Crime Act of 1919, on the basis of the recommendation of the new bill provided for the continuation of wartime restriction. Trial of offence by special court composed composed of their high court judges. Further, no appeal could be made against the decision of this court. Proposed authorizations. Proposed authorization of the government to search and arrest without warrant. Proposed authorization of the government to search and arrest without warrant. Detention without trial of up to 2 years. Without trial of up to 2 years. Restriction on the civil liberties. Okay, restriction on civil liberties, restriction on freedom of speech, assembly and the press. Gandhiji's response to the Rowlatt Act. 24th February 1919. Okay, at the Bombay, Gandhi formed the Satyagraha Sabha to protest against the Rowlatt Bill, and the members signed it pleads to the disobey Rowlatt Act. Gandhi asked the Punjab and the Delhi incidents of violence. On the 8th April, Gandhiji tried to go Punjab. Okay, so फिर से देखो Gandhi's response to the Rowlatt Act. On the 24th February 1919 at the Bombay, Gandhi formed the Satyagraha Sabha to protest against the Rowlatt Bill. The members signed the pledge to disobey Rowlatt Act. Okay, signed a pledge to disobey Rowlatt Act. Gandhi asked the countrymen to observe a day of Hartal. On the 13th March, but later changed the 6th April. Okay, Punjab and Delhi incidents of violence. On 8th April, Gandhiji tried to go Punjab to help quiet the people, but the government deported him to Bombay. Okay, so on the 20th February 1919 at the Bombay, Gandhi formed the Satyagraha Sabha to protest against the Rowlatt Bill. The member signed to pledge to disobey the Rowlatt Act. Gandhi asked the countrymen to observe a day of Hartal on 13 March, but the later changed on the 6th April. Punjab and Delhi incidents of violence. On the 8th April, Gandhiji tried to go to Punjab. Okay, Gandhiji tried to go Punjab to help the quiet the people, and the government deported him to Bombay. Jallianwala Bagh massacre happened in the Amritsar 13 April. Okay, 13 April में हुआ था. क्या हुआ था? 10th April, two local Congress leaders, Dr. Saifuddin Kichle and the Dr. Satyapal were arrested. Okay, छोड़ दो. The army was called in Amritsar, and the peaceful crowd gathered. The Punjab was placed under the martial law. Okay, in the 10th April, two local Congress leaders, Dr. Saifuddin Kichlo and the Dr. Satyapal were arrested. This arrest coincided with the Gandhi's arrest.
there was violent protest all over. Okay, there was violent protest over. Okay, okay. गांधी से अरेस्ट की कोइंसाइड था और कांग्रेस लीडर के भी अरेस्ट था. ओके, तो इसलिए वायलेंटली प्रोटेस्ट हो रहा था ऑल ओवर द इंडियन. So the army was called in and the Amritsar city. Okay, called army was called in and Amritsar city was handed over to General Dyer. General Dyer, who issued an order prohibiting the public meeting and the assembly. Okay, who issued an order prohibiting the public meeting and the assembly. The peaceful crowd gathered at the Jallianbagh to celebrate the Boishaki. Okay, peaceful crowd gathered at the Jallianbagh to celebrate the Boishaki, and Dyer ordered his Gurkha troops to open fire on the unarmed peaceful crowd without the slightly warning. So without the slightly warning, Punjab was placed under martial law. Placed under the martial law. After the massacres, on the 18th April, 10th April के बाद 18th April, Rabindranath Tagore, Gandhi called off. Gandhi renowned the Hunter Committee of Inquiry. The committee did not impose Congress non-official committee. On 18 April, Gandhi called of the Satyagraha in the view of the widespread of violence. In the view of the widespread of the violence and the martial violence, Gandhi called of the Satyagraha confessed it to be Himalayan blunder, to be a Himalayan blunder, to have the allow in insufficiently trained people to offer the Satyagraha. Insufficiently trained people को insufficient train करना to offer the Satyagraha. Rabindranath Tagore renounced his knighthood on the 13th May in the 1919 to register his protest against the Jallianwala Bagh massacres. Rabindranath Tagore renounced his kinghood on 13th May to register his protest against the Jallianwala massacres. Okay. Gandhiji renounced his title Keisar-e-Hind in protest. Renounced title Keisar-e-Hind in protest. Hunter Committee inquiry, 3 Indian members, Sir Chimala Harilal and Setal Bhatt, okay, from VC Bombay University, and PT Jagat Narayan, MLC in UP, Sardar Shiva Chada Sultana, Ahmed Khan lawyer. Okay, so Hunter Committee of Inquiry, 3 Indian members था यहाँ पर, and the committee did not impose any panel or disciplinary actions. Did not impose any panel or disciplinary action because the Dyer's actions were condemned by the various superiors. Okay, condemned by the various superiors. The committee did not impose any panel or disciplinary action because the Dyer's actions were condemned by various superiors. Congress non-official committee, Motilal Gandhi, E.R. Das, Abbas Taibji, Emar criticized Dyer's act as the inhuman and said there was no justification in the introduction of martial law in the Punjab. Okay, so यही था गांधी साउथ अफ्रीकन एक्सपेरिमेंट.